I guess we are live and everything working fine, sound and all working fine. Let me just quickly check. Why there is some kind of echo and all. Hmm. I guess it should be all right now. Some settings. Okay. Okay, now we are good to go, I guess. Okay. Sound perfectly fine. No problem. So let's start our today's topic. So yesterday, although we have done pointers, completed pointers, so we will continue that C programming series later. But there will be a switch throughout this week. But after this lecture, today's is part 2 of information gathering. Today we'll be doing, so the topics, the main topics that we have for today is, let me just quickly see that. So footprinting through search engines we have done, although we have to do that Shodan and more, we will look more into the Google Docking thing. Okay. And also OSINT we will be covering at last. I have already told. Is my webcam is fine? Yes, it's fine. So it is okay. So email footprinting we will be doing later. Today we'll be doing website footprinting and network footprinting. So in website footprinting we'll be getting to know about a tool that is wget. It's a Linux command, you can say. Or in network footprinting we'll be doing traceroute. Also we will be having the that Shodan browser introduction and docking, Google docking. Some topics were left. We'll be seeing some of the more docs that can be used to exploits, used for finding exploits and vulnerable websites. So Zora, yeah, hey, hi brother, welcome to the stream. So today I need a good interaction because today's the stream is much more inclined to cybersecurity, to the first phase of information gathering, to the first phase of, this is the first phase of penetration testing. So today I need a good interaction. So topics I have already discussed. Okay, so the tools, the practical thing that we are going to do, that is Shodan, then Google Docking. The sequence can be changed. Traceroute we will see, Wayback Machine and wget to mirror the website. Okay, so all the things that we will perform today, okay, are under guidance and all. You should not deliberately done with C. No, not done with C. We are running that parallelly. C is done with till pointers. You can check the community post. I have given the schedule how it will be going. We were having that break now for 1 week. We are not having this stream. So C programming was a bit delayed, and it was not that much appropriate to do right now in place of penetration testing. So okay, so we are going parallel to it. Today we have second lecture of information gathering. Then in the upcoming week we have 3 more lectures of C programming. Upcoming week is a bit busy, so I will not be having stream regularly, but I have given the schedule, I guess. Okay, so let's have a quick recap what we have done in the part 1 of where it is information gathering, present function 1. Okay, so we have begin the penetration testing thing. The first phase, that is information gathering, or you can say footprinting and reconnaissance. So footprinting is something like using the gathering the possible information for a targeted computer system or a network. But if you talk about digital forensics, you can a footprint for a particular person, you can find the information. So there are two types of fundamental types of footprinting. That is passive footprinting, that is done quietly without interacting with the target. Second is the active footprinting, which is somehow can be said as reconnaissance, in which we have to scan the net target and all interact with the target. So objective we have already discussed. Okay, so
There's a lot of information that is available widely. So why we do footprinting? To narrow our focus, so we can strictly focus on the things that are appropriate to us. Okay, SS is the security posture, already told. Spot. Okay, so we do footprinting in order to spot the weaknesses and trace them. Okay, so gather all the information, gather all the weaknesses, vulnerabilities. If we talk about a system, then if we see, if I have to make a story, na, so you can say you are collecting dots. Like dots are something like weaknesses and vulnerabilities, and then we are building a map by connecting them, and then we find a plan. Then we create a plan. Then how to exploit that particular system. So starting of the this stream will be a bit theoretical. So bear with it and don't leave the stream, because you will, if you get bored na for the theoretical thing, so practical will be covered later na, so you will get confused how to do that practical things. So all the things are covered. Objective of footprinting I've already done. So today the topics that we have already covered, that is footprinting through search engines only, this topic, and footprinting using Google. We have seen Google Docking and all. OSINT will be covered at last. Today we will be doing website footprinting and network footprinting. But before that, we will be continue with that footprinting using Google. And the one more thing that we will covering, because I was not that much prepared for the stream today. So it will be, the stream will be a bit unstructured. So let's first see the Wayback Machine. Okay. So Wayback Machine in the previous stream was not working, but let's see today it's working or not. Yes, today's it is not. It's not working today also. Why it's not working? The yesterday or the stream one, I guess it was not working, and today it is not working. Wayback Machine, we can sit. We don't need the whole website. We just need the Internet Archive. Internet Archive. So this will be working, but we search something, na, so it's not working, I guess. If it enter, yes, 429, too many requests. Let's try to do like run from Firefox in a private tab. Will be able to Internet Archive. Let's see if it is working or not. Although we have seen all the things that is available, because there are many free videos and audios, clips, books that are available. Let's see that first, if it is possible to. Okay, so this is working. So these are all old books and all, you can say, or textual books and all. Or you can find, if you want, you can find like Spanish book by language. It's a Spanish book and all. Gazettes of India. So there's a lot of book. There's not necessary that these books are important to you, but sometime you get uh, important information, gold in a bunch of garbage, you can say. There are mangas also. Unsorted collection, yes, they are unsorted. They are not sorted properly. Research paper from Harvard University, so you can use that. Okay, so these are not that much of use for us now. If we talk about now, I've also discovered something like TV. Trump archive. Okay, old interviews uh, are there. I think most of them are interviews by news channels and all. Okay, so these are the things I guess goes down pretty much every day right now, I guess. Yes, it's a profit non-profitable na. So there's not that much, although they have maintained a matlab, nice, they have maintained this archive nicely, very nicely, although they are not that much profitable, but still, let's see if you can use that for the see the website history. Yes, 429, too many requests. Okay, we don't need to save pages and all. I find a link here that is redirecting us to some kind of uh,
You can say old movies and audios clip. I don't remember exactly. I think this was the one. Okay, you got old movies or something. Anime is also there. This information can be useful if relevantly used or if needed at some time, but this is only for information. They were getting DDoSed some time ago. Yes, can be a possibility. But if it's the 429 error, na, so there can be a possibility because there are too many requests that they are DDoSed. I start last week learning ethical hacking, but still I find how to start. Uh, Ethical hacking, I guess you are referring to penetration testing, so you can join the stream from now, no problem. Because we are on the first phase of ethical hacking, that is information gathering. Because why we gather informations? Because we want to, in order to exploit something, we need to understand about its structure, how it is made, and all. We need to gather the information. We need to find the loopholes in the system. So we are doing this. Okay, so they are APK archive also. I hope we get lucky batcher here. Uh, it's not necessary that we have, but yes, lucky patcher is there. But that lucky patcher is on the normal web or not? It's there. Nice. So this is a. I'm not promoting this tool, but this tool is used. I think some kind of getting modes for many apps and all. I use this back in my childhood for downloading games, modded games. So currently it is the version 11.9.7, but you can see you are getting pretty old version also, like 6.225 version 5 also you are getting. Also they were under a lawsuit for making things available for free for some content. Okay, this thing I don't know. There is a other alternate also, I will tell that later. When we explicitly finding someone about something, the website and all, I will tell that later. So let's try to play anything. If it is DDoS, na, so I think web archive is only DDoSed, not the whole website. uh, let's try to run something. I have to be careful, like computer and technology. Let's try to see this if it is working or not. Hacking and infosec stuff, yes. Something related to our field. So we have got lectures or something. How Tor browser protects your privacy, and hacking minutes. How so where it is published. So hacking minutes, how easily Facebook, Twitter can be hacked tutorial. Okay, so they have given a tutorial, but it was published 2016. So it's not that much of use, although it can be relevant at that time of 2016. But the security is no, it's 10 years back, so security must be that much. Okay, we have got find information from a phone number using OSINT tool. We have got important thing here. Let's see. There's a video or something. Uh, but now what next? I install Kali, but now what next? So directly installing Kali Linux will not make you or eligible for learning ethical hacking. Before learning ethical hacking, you should have a fundamental knowledge of networking and operating systems. And after that, you have gained the knowledge of operating systems and all. Uh, then the use of Kali Linux will be useful for you. You will be learning after that Linux scripting. So it's not much that much relevant now if you install Kali Linux and you don't know how to use Linux commands. So you should have a hands-on knowledge on Linux command. You can follow my stream, that is Linux shell scripting. I think there are 9 parts and all the things basic to, I can't say advanced, but too much extent upper than intermediate it is covered. Mm, I cannot play this video. Is there some kind of copyright I can get? Okay, so I have given you the URL. Now you can see yourself. Okay, I will see that later if it is useful or not. So this is how you can use this Wayback Machine. Wayback is like way back time, when we talk about in a story mode, na. So it's useful when we are able to use this. What we're doing today, Deva plays. We are doing footprinting and reconnaissance, information gathering, the first phase of penetration testing. Let me just try to use google.com here.
if I am able to. Okay, too many request engines. So yeah, another information that we got that they are using engine server. They are not using they are not using Apache. We can confirm that from DNS. So there is another tool for gathering information about a website. So although this will be covered in the DNS footprinting thing, okay, but let's try to see uh, webarchive.org. So we get the much information about this website. So we are footprinting a website that is used for footprinting. You share beginner video of this. So not necessarily needed anything. If you are learning information gathering, na, so there is no matlab basic thing you don't need. है ना? You can follow the first lecture, the part 1 of the information gathering, because I have covered most of the theoretical part there. Let's see where it is hosted. Hosting network is in mainly in USA and Germany. And yes, I was right. They are using six servers are using Nginx. Four servers, I think the security cloud is using Cloudflare technology. Then Open SSH1. Okay, so they are using Debian also. I think virtual machine, some kind of virtual machine they have been hosted on and all. Apache server they are using Ubuntu. And what's the current Apache server? Apache. Apache. Apache 2, sorry. Mm, Apache 2. Why I'm not getting the version? Syntax are in line 80 of, I think. Okay. There is some problem with my Apache system. Status Apache 2. Okay. Install Webpalizer extension is pretty good for getting info out of the server and stack. Yes, I know. That will be covered later. We are going that step by step. Now we cannot just for that Webpalizer thing. We have to study first the DNS footprinting. We need to study about. So I have already told. Now I am just seeing, but out of curiosity that this web archive that we use for footprinting. So we are footprinting this web archive also, that we just out of curiosity knowing that what server it is hosted and all. Not that much. So we will cover that what is AP, IP, ASN name, host, and hopes, and that an IP address, how they are working, how they are linked, how some domain works, how this Nginx server, Cloudflare, Apache and all works. So I think we can run nmap scan here also. Views are limited to 50 results. So there is an option. Okay, yes, this is this table. So we will after completing the DNS footprinting thing, we will be studying this. You can say flow chart or something. How to because when you get how much reward you get. Reward. What is the first bug found? Uh, Okay, I missed some chats, I guess. What we doing today? Information gathering. You share beginning video of this. So follow the part 1. Okay. What is the first? Okay, first bug you found. First bug. I think CVE 240. CVE 2019. No, CVE 2022. And it was in the website, I guess. Not website. It was in the application Zomato. Uh, so the consumers information was getting extracted by just changing the location of your, like I have created an account and I have used the same address as of other users. So what it was doing at, at the time, it was back like 4 years ago. Now it is corrected. I think I've got around it was not critical, intermediate. I got I think exactly, I don't know, I think $260 I have got. $260 exactly, I don't know. uh, Install Webpalizer. Okay, we will be doing that later in the part 4, I guess, because next one we will be having email footprinting and all. So DNS dumpster you should not be worry about, because we'll be doing that in detail later. So Wayback Machine is not still not working. It's still down. No problem. So let's move to
trace route we have to cover. I have not made a structure today, na, so it will be much unorganized, I guess. No problem. Where is my presentation? So this is done. OSINT will be covered later. Email will be covered later. Website footprinting. Okay. This is all covered. Open source intelligence, although I have made the PPT, but we will do that later. So let's start with website footprinting, and then we will be going wget command. Okay. So, okay, the bug bounty we were discussing about. So the problem was like that. If I am selecting the same address, should I use information gathering on my interviewer? You can, if you want, you can. But passive footprinting, passive information gathering without interacting with the interviewer. Okay, so in the Zomato, what happened? Like when I'm using the common address of somewhere, like some random address, and it is already registered in the database with some other contact details, so I am getting the same contact details with me, like its phone number, its address and all, even the wallet amount also of the Zomato. Like if there is some kind of refund and the refund is initiated to the Zomato wallet, so by the just using the address pin, like, so I think it was in the error was in the vulnerability was found in the database, you can say. So there was an SQL query that was running not good, I say, I can say. So it was, I think, reported CVE 2022456. I guess, I don't remember. After that, I stopped bug bounty because I have reported many bugs, but all the bugs get repeated. I got a reward mail like this bug is already reported, or something like that. So website footprinting. Website footprinting refers to the monitoring and analyzing the target's organization's website for information. Okay. So if you want to footprint or information gathering for a particular organization, you should first target their website. So you will be getting the most information from their website, like their teams that are working in an organization. So team head, team leader, managers, they are working, HR, they are working, and who is the owner of the organization, what is the fundamental role of that organization. That information will be you get the information from the website. So that is, you can say, passive footprinting, and a footprinting in a good way, not directly interacting with the by messing up the website or something, like uh, dosing the website and hacking or something, like browsing the target website, what they provide. So software used and its version, like we have used the DNS dumpster thing now. Operating system used, okay, subdirectories and parameters, file name, path, database field name, query, scripting platform, contact detail, and CMS. CMS is content management system and details. Okay. So how website footprinting is done? So although I have written many names here, but these will be covered later when they are actually needed. Okay. So we are going just basic how to gather the information and what tools are required at a fundamental level. Okay. So using burp suit cannot be used, without interacting. We have to target or ping the website first, then we will be catching the, you can say, the network, or network intercepting. We can say we can network intercept the network by use of burp suit, and similarly for Zap proxy, Paros proxy, and website informer and Firebug. So, so these are used for viewing the headers that provide connection status and content type. Like connection status is like when you are connecting to a particular website, and so they return you some kind of code like 404, the website not found, 403 unauthorization, 202, 302. So 202, 302, 402, 333. This three codes are for unauthorization, and like 429, like if the website is not responding and something. So these are the connection status code, you can say. Accepted ranges, so the IP that they use, okay, the IP ranges that they are using. Last modified information, this can be got in the, you can say, the Wayback Machine. X powered by information, web servers in use and its version. Web servers, like we have seen in the DNS dumpster, like Nginx server they are using, and one server they are using of Apache, which is hosted in Debian 2.6, I guess. So this is website footprinting. Anything left? Yes. So when you got, like, from wget command, if you are able to get the website, or clone the website, or you can say mirror the website, so what you can do? So you're not a bug bounty now.
No, I'm not doing bug bounty. So examining HTML source provide comments in the source code. Okay, so what developers do, they write comments in the source code in order to, when I was doing coding, when I was doing C programming, we also leaving comments in the code. Why? So why it is needed? Because when we working in a team, so the code should be equal to both. So if someone is working on another process and I am working on different process, so by the reading the comments, we got to know that how this code is working. So that is why developers and all, comment their source codes and leave comments inside. So contact detail of web developer or admin, file system structure, script type, what they have used like JavaScript, TypeScript and all. Examining cookies may provide software in use and its behavior. So we can examine cookies with the Bubsuit tool only. So website footprinting using web spiders. I think they are not, this is not completed. So web spiders, what are web spiders? These are automated programs that scan the website. Okay, and basically scan the content of the website, the content type and all. So that is how your search engines work. I have told that yesterday, I guess. Okay, so website footprinting we have done. Okay, Wayback Machine we have done. Bobsuit Zep proxy we will see that later, because when we are actually interacting with the target, we need a specific kind of environment or machine. So what we can do, I think we have to, I think basic Google Docs we have already performed, and we need to see today Shodan web browser. Okay, Shodan web browser. Okay, I think it is okay linked. So how to set up Shodan web browser? Should I tell that? uh, I cannot tell because my key, the API key will be, if I write here my API key will be leaked out. uh, So you can, what you can do, I think I have written somewhere that Shodan. Mm. So first, for the Shodan web browser, what you need, the install, where is the installation part? Mm. Just wait a second, I am finding that installation part. Okay, so for Shodan, for installing the Shodan web browser, what you need, firstly you need Python 3 installation, then pip installation. Then what command you will write? Let me write it here. If I, no, I cannot write here because it will be leaked out. So first command what you will be using, like sudo apt install. After installing that Python 3 and pip, you have to follow these commands. Sudo apt install uh, Python 3, because it is Python, Shodan is Python supported, like this. So Python will be installed. After that, what you have to do to start the browser, Shodan init, and here will be the API key, and from where you will get the API key when you come in this Shodan and you complete the login and registration part. Go to the account, and in the account you will get the API key directly. Okay. Use OBS to blur sensitive information. I don't know, brother, how to do that. I don't know how to do that. I'm not that much advanced in streaming and all. I just come, upload the thumbnail, description from the chat GPT, and the title, content, all the thing from the chat GPT, and just come live with my webcam. You use Kali in CMD? No, Kali in CMD? No, brother. It is terminal. So here we do all the scripting things. I don't use Kali in CMD. Kali is like, it's a GUI. Yeah. This Linux is with, you can say Linux is interacting with genome and KD environment, and that is how this Kali is formed. Inside Kali we have this terminal. Like you have CMD command prompt in this, what you say, Windows. In Windows you have CMD. So similarly we have terminal in Kali Linux. It's similar operating system. No, there is nothing like any difference. So what we were doing. So Shodan I have already told how to do this. And in it, after that, there will be a random API key, like I am writing random digits. So
there will be API key, you have to copy paste here, and when you press enter you will be redirected to the Shodan web browser and you can start browsing. Okay, so let's start. Firstly will be see how it is. Okay, I don't have the premium, although I was having the premium and they have given the premium for $1 throughout the year, but I think I have lost that ID. No problem. So categories what you can explore: industrial control system, databases, network infrastructure, video games. Let's go to databases. What databases information they have: MySQL, PostgreSQL, React, MongoDB, Redis, Elasticsearch and Kibana Elastic, Memcached, Cassandra, CouchDB, and okay. So from this, I only know I know MySQL, SQL, MongoDB, Redis I know, Elastic I know, Cassandra I know, CouchDB I know. I mean use MSL or WSL you are saying? MSL, MSL क्या है भाई? You use Kali in CMD. Not getting your doubt, brother. So these are the databases that. So it is also a web browser. So it has also that same thing, information gathering from which you get information. So what's the basic difference between the normal search engine like Google, Brave, and all, and Shodan? Okay. So let me open that here. Okay. So how a normal search engine works? Firstly, I will be telling about that. So I am a developer or something. I have created my website. I have live that website on a particular domain. Okay, I have bought a domain, for example. I have registered that domain with the Google and all. I have done all that formalities like SSL certificate and all. At the time my website is registered, so there are automated programs in Google search. Sorry, WSL. Yes, WSL is Windows. What you can say are Windows subsystem or Windows system for Linux, like something like this. I don't have Windows na. This is my default operating system. Why I need to use WSL? You are saying that you should use WSL. You are telling me to use Windows. Nice joke, good joke. So how normal search engines work? So you have registered the website, your website is live. So so the perfect term when your website is live and all, so it is known as index. So your website is indexed. So how your website is indexed? So search engines have a particular kind of crawlers or spiders, you can say. So at the time your website is live, the automated program start running. Dual boot, no, primary. Dual boot, you don't know the story, yaar. I have tried dual boot in my MacBook M4. So accidentally I have deleted the APFS file system. From that day I have forgotten how to use the dual boot. So in my this old operating system, I think it is HP Ryzen 3, very old, typically 6-year-old laptop. So I have installed this Linux primarily by using USB boot, not dual boot. So so there are you can say search engines have different kind of programs, automated programs. These are known as spiders and crawlers. So what they do, RIP 1 TVSSD. So what they do, they scan your website, scan all the contents. Okay. So what they do after scanning all the contents, they index your website. So on what basis the indexing is done? So the type of content that you have provided in your website, that is how indexing is done. Okay. So now after completing all the thing, your website is indexed. Now it is registered with the Google, and it will be shown in the google.com when someone search for it. So after that there comes ranking of the index. So how ranking works, like for example, there is a website of cars, like all the information related to all the companies and all. So if I search about a car, like keyword car, so any website can be like if I search directly about car. So first website is Acco, car wale, car dekho, not particular kind of company and all. So it, you can say it is a general website.
So, but what I can do, if I search for particularly for Ferrari, let's take a standard car here. Let's search for Thar. So when I search Mahindra Thar, okay. So although the first website is the common website carwale.com, but second website you see that is mahindraauto.mahindra.com. So authorized website is come. So this is how indexing is done. So I have searched for a particular keyword. Okay. Now what crawlers already crawled the website. They know what keyword would be specifically searched. So we will be indexing the website on that basis. So firstly, when I have searched car, so there is no Mahindra.com and all. So these are all random websites. But the ranking of this index when I search particularly Thar. So this website ranking got increased because I explicitly searched for this Thar thing. So this is how normal website work. I hope you understand. Normal search engine work, sorry. So let's move to the working of Shodan. Although that this is not that much useful, but you know that you should know the roots. Okay, how a search engine is working, how the search customized search you are getting, like you are searching something and how it is returning. Okay, so for Shodan I have written something. There is a method. Okay, so there is a method called banner grabbing. So banner grabbing is a technique used to gain information about a computer system on a network and services running on its open port. So what it does, irrelevant of that spiders and crawlers inside the automated programs and all, it give you the websites, or you can say the IP. It directly give you the IP. You don't need to go to DNS dumpster and write that DNS or domain name and find the IP. It will directly give you the IP with the open ports, with the common you can say CVEs, common vulnerability and exploits and everything. And it is you can say it scan all the IPs and main ports. Okay, first point, send respond according to the data we send, like headers of HTTP. Okay, so when we do dorking of Shodan, na, we will study today how we'll be doing that. So we explicitly search for the headers of HTTP. Okay, so on that basis, it scan all the open ports and it give you the result of that HTTP headers. Okay, so banner grabbing I have already told. First process is the banner grabbing, then port scanning, then IP enumeration. After the IP enumeration, it gives the result to us. So every information is unique. Okay, so why Shodan is used? Shodan is famous for IoT information. IoT is like Internet of Things. Internet of Things, you can say routers and camera. Common example. Now I understand you talk about index file type, etc. Huh? Yeah, Umang Vaishnav, I'm not getting your doubt. Firstly, you were telling Kali CMD and NWS, and now I understand you talk about index file type. Index, not index file type, yeah. Indexing. Index file type and indexing are two different things. Indexing is like, you can say, uh, the pseudo data of a website. Okay, the website content is, content is very, very large. So what spiders and crawlers, you can say, the automated programs, what they do, they create a structure, or you can short form of the website. So that is, you can say, so I don't know the official definition of indexing, but it is, you can say, my way of defining index, how the index is working in search engines. Let's search the official website, official definition, index of website. You can say indexing of a website. Okay, so web indexing or internet indexing is the process by which search engine discovers, crawl, and store information from web pages in their massive database, making them eligible to appear in search engine result pages (SERPs). The process begins when search engine crawls, also known as bot or spiders. I have already told. Hmm. Hey, how good are you? What is Kali Net Hunter? Uh, there are three doubts. Okay. So first one, like what? Where is Shodan here? Okay. Indexing, we have, you already know na what's indexing. Okay. So let's address the doubt first. What is Kali Net Hunter? I think Kali Net Hunter is used for the downloading the Kali tools for Android system. I guess I don't know exactly. Hey, how good are you with Shodan? I don't know. Still finding.
It's very useful in red teaming assessment. There will be like time when you can't do any nmap scam or IP. Shodan plays a big role in scanning ports for IP massively. Yes, exactly. Mm, how good I am in Shodan. So how you can judge someone, like how you know that you are good in something? I don't know. I तो make मतलब I don't remember every each and every command. I also मतलब I तो document everything. Like I write every each and every command. Like if you talk about matlab, told me like write the exact dork for this thing, for finding this thing, I cannot write. I will refer to the notes or some kind of website or something. I will find the doc there. I will create that at that time. I will not explicitly remember each and every doc how it is working. So by taking test on the topic, for that I have to go for like OSINT or something. Like for Shodan, like for like if I talk about myself, I do nmap. Although I know like all the information is available on Shodan, but I do nmap. Can we now stream or try to pawn a computer with a tunnel? Why you have to do this? Why? You come every day, no. You can see the time. Le- le- I can do that. I can do that using Shodan. I can do that, but the environment is not set up, na. Like if you want to pawn a computer, I need that first. I need to set up a virtual machine for making a random computer. That if I mess up that or something don't happen like this. I know how we can do like to pawn a computer with eternal blue metasploit framework. And also uh, I need to tell you something. Metasploit is you cannot use in OSCP. We are strictly studying, not strictly studying, but we are studying much aligned to OSCP now. But Metasploit framework is not used in OSCP. Using Shodan, yes, we can do that, but the environment is not set up that much. I didn't understand what you have said. No, using Shodan, no search target from Shodan. I didn't understand what you have said. Can you please elaborate? So let's move to Shodan first. Okay. Where are the docs? I have mastering Shodan docs. Yes, 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 yes. I think this is the one. Oh. Hmm. So daylight, can you tell me if I want to do like this to pawn a computer eternal blue now? Like from where I can get that demo computer or something? Or you are explicitly telling me to target a particular IP from eternal blue framework? Because we are on the first phase of information gathering now, so we should be going step by step. If I directly just go to Metasploit framework and someone randomly come into the stream and ask for what is Metasploit, so I have to explain that from the starting, like what we are doing and why we are doing. Let's go stepwise now. Okay, so let's start. I think he want to target a IP from Shodan. The reason that I am not performing like targets and all on the live IPs or something is that we need to practice everything because we are on stream now. We don't know what happens. Okay, so we need to practice each and everything in controlled environment and on tested systems. So I don't know if there can be there can be a possibility find a target using Shodan from point using SMB version eternal blue target TCP port for which is used by the server message block SMB protocol. ओके आई नो यार मैं समझ गया पर टारगेट आईपी कहाँ से लेके आओगे? वो टारगेट आईपी तो जो 445 पोर्ट बता रहे हो एसएमबी वर्जन में बता रहे हो, मैं समझ गया उस चीज़ को, पर वो आईपी तो लाइव होगी ना यार किसी की. That is not in my hand ना, that is not controlled. You can not say that this IP is controlled and owned by me. If I just mess up with the system or something, so I will be the responsible person. समझ रहे हो इस चीज़ को? यार कर सकते हैं पर वो
लाइक आईपी इधर अगर मैं जाऊं, जैसे कि अगर मैं वेबकैम XP5 नो, अभी मैं कोई पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन नहीं कर रहा, ठीक है, ओ यस, वही वही चीज़, हम लाइव है ना यूट्यूब पे। अब मुझे नहीं पता सी कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस हो, कुछ इस तरीके का कुछ आ जाए, शो हो जाए, या कुछ भी हो सकता है यार, देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटी, है ना। सो कुछ भी हम टारगेट परफॉर्म करें, हाउ टू गेट अ रिवर्स शेल, आई मीन ही इज नॉट हैविंग अ स्टैटिक आईपी और अ डायनेमिक डीएनएस शेल बैक इवन इफ ही फाउंड द सिस्टम। एग्जैक्टली ना, वही तो कह रहा हूँ। Are we talking about just a computer or actual real hardware system? No, we are not playing hardware here. We are just talking about a random computer. So there's a thing I should tell you. Uh, you can do anything if you want, है ना? Like I am not promoting, but hack anything if you want, but you are the responsible one. Okay. On in Shodan, we get IP from all around the world that is vulnerable. Okay. If I try to pawn some IP from Eternal Blue and all, there can be a possibility because I am not using that MAC changer, ठीक है, not IP address. If someone behind that IP is more intelligent me or more advanced than me, ठीक है, he gained reverse shell on my computer, what happens? Who is responsible? है ना? I am not assuming that I am the best hacker of this world and no one can beat me, है ना? We have to do everything responsibly. We are good hackers, okay? So I assume everyone understood my concern, what I am saying. Then you can use a free VM on internet if that's possible. The problem is if I use free VM, na, it will not that much. Okay, I tell you the setup how it will be done. Okay, so firstly, I need a virtual machine. Okay, I cannot just run attack from directly from my primary operating system that I use for my daily work and streams, because most of my information, my Google accounts and everything is logged in here. Okay, when I have a, because I am planning to buy a good laptop, good Windows laptop on which I can run virtual machines. Okay, because this in this Linux is primary. Okay, so when I install this you can say virtual machine or VBox or VMware anything, I will be using that Kali Linux to perform hacking and all. For Metasploit, I have to explicitly use another, you can say, image or ISO image of Kali Linux in order to perform that eternal blue or something. We have to set up an environment, and all the environment will be a NAT connection, not a bridged connection. This connection that I have is a bridged connection, and this connection is directly connected to my router, and to my router, my mobile phone, my all the things are connected. So I cannot risk my laptop or risk my IP. Okay. Although yes, my IP is okay. We can use Apache to server with port forwarding, and if the connection doesn't resets, then we can expect it to work. Here I am explaining that same thing again and again. My laptop is not that much capable na, for doing that much thing, because we are already streaming. Okay, and I'm not giving any excuse that I don't know how to do. I know this thing, all that you are thinking, port forwarding and all. I can do that, but I don't know the result. What will happen na? Like when I come on stream, I test everything before coming on the stream, like how it will go. If I find anything, I will search anything, how it will be going. Are you understanding my concern? I'm telling you, we can hack anything here. If you want to hack anything and hack anything if you want. I'm not stopping you. I'm not promoting you. You will be the responsible one. But if you're telling me to perform attack or Eternal Blue, like Eternal Blue framework, like targeting TCP port 45, yes. Okay, targeting TCP port 445, we can do that. Okay, from Google Docking, I have got a website. Let me show you something. Uh, okay, let's assume the setup. Yes, understood. है ना? So I have got a website. We were doing Google Docking in the previous lecture, and I have got a website like this. This is a triple IIT Kalyani website, and from which I have got the parent directory. So I can find vulnerability in this website and hack this website easily, much easily. I know how to do this, but I cannot do that in live stream. Na? If I got caught, if I matlab, messed up with the website, I don't have control over it. What I will do?
And on the live stream, we have the proof that I am deliberately performing attack or something. You got na what I am saying. So you can perform anything, you can hack anything, but you have to be a little bit smart. Okay, you have to perform. You can say like, I don't know about you people, how much experience do you have, but I have worked in some kind of projects, okay, that are relevant to corporate world or something. So before like jumping anything and hacking anything, targeting any IP addresses, okay, we have to sign a bond. We are penetrating a website on the concern of the user that has created that. So we have to sign a bond that if we go out of limit na, so the responsible person will be me. Most of our ISP don't let us port forward. We can do it in from the router, but we are under CGNAT and the port won't goes public. Only was to get a static IP. So what can be an ideal setup to hide yourself? This can be a stupid question. IP dodging. IP dodging, but IP dodging is possible. I don't know it is possible in the primary operating system, but it is possible in the virtual machine by virtualization. IP dodging, if you have, so it changes your system IP every 2 to 3 minutes. Again, matlab randomly assigning your IP. Like it works like, proxy, VPN na. So what VPN does, like if I am using my VPN, so I request to a particular server. Okay, let's take a diagram here. It's a good topic to be discussed. Okay, Cloudflare work, I guess. I think it is paid. Cloudflare thing is paid. Let me show you the example. So this is a, you can say a server or something on which we are targeting. Okay, this is us. Okay, these are we. So what does VPN do? Okay, like if we search directly on Google, na, our search directly goes to the server. But we are using VPN. First go here, then go here, it goes here, then it goes here. Like this. Which laptop you want to buy? I don't know. I will see it later. Yeah. So this is how VPN works. But how proxy works? There are multiple chains. Okay. So then this will be going to this setup, then this router, then this switch, main switch, then this, then this. So these switches or IP address, you can say, are situated in different countries or different locations. Okay. So this is known as, you can say, this is not explicitly known as, but this is known as proxy. Okay. So you are using multiple chains or multiple proxy chains. So that is how IP dodging also works for a this work for a user, or you can say for a particular user in an operating system. But IP dodging works for a whole operating system that you have. Okay, so it changes your IP every 2 to 3 minutes. There is a paid tool, I guess. I don't remember the name because I've not done penetration testing from a matlab, large. Like I have solved my last HTTP machines 4 to 5 months ago. You know about Cube's OS. It like can be used in place of VirtualBox Kali. Do you know Tails? Tails operating system. Tails. I don't exactly Tails. Tails. Yes. TAILS. Cubes, though I don't know. Unix I know. Tails is also an operating system in which IP dodging is very, you can say, easy to perform. You don't need to write your like custom shell scripts for dodging IP. Yes, one by Tor. Yes. So that operating system can be used to perform, like it can work behind the image. Like we can, mirror, or what you can say, not mirror, uh, superimpose two operating systems. Okay, so the first is our Kali Linux, then and at our back end we can use Tail OS for IP dodging. So both can be compiled and can be used. So Kali Linux will be used for pen testing, and Tails OS will be keeping you from matlab, keeping you private. Your location will be preserved. So how can one person find location by CDN mapping? That too I don't know, yaar. सर्च क्यूब ओएस क्यूब्स ओएस भी देख लेते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है ओके क्यूब्स ओएस is a security focused desktop operating system that aims to provide security through
compartmentalization. Compartmentalization is providing through the use of virtualization technology. This allows you to segment network segmentation. Cubes is said as the world's most secure OS. Most secure OS. I think it was Tails. Let's search that also. We are free. Internet is free. Our most, I don't know which is most secure operating system. यार ऑपरेटिंग ओएस लिख देता हूँ. Chrome OS. They are saying Chrome OS is frequently cited as the most secure mainstream Linux distribution developed by Google. How it looks. Chrome OS I don't heard of. All are behind the same logic. Yes, exactly. Chrome operating system. So it's a Linux distribution. Okay. Formerly started as Chrome OS, an operating system designed and developed by Google. It is derived from open source Chromium. Okay, Chromium. Written in C, C++, assembly, JavaScript, HTML5, Python, Rust. हाँ, that is why Chrome OS is one used in Chromebooks. Yes, Chromebooks. पर Chromebooks तो यार बहुत that are secure? I don't think so. That are secure. Apart, like, Tor have created their own operating system. यार Tor से ज़्यादा safe मतलब Tails OS. Okay, Cubes I can say Cubes भी safe है. Parrot OS भी safe है यार. But Chrome OS secure. Most secure Linux distro. Although we are going bit off topic, but no problem. Cubes, yes. Cubes, we got. The search engine is biased. So, but we are using Brave, na? So Brave should be against Chrome. So the most secure Linux distribution depends on specific use cases as different distros prioritize various aspects of security and privacy. For maximum security through isolation, Cube's operating system is widely regarded as one of the most secure options. Cubes. Parrot, okay. Other are Parrot, Kali, Onyx, Kodashi, Alpine. Okay, there is no name for Tails OS. Nice. Brave is made on Chromium. Yes. Brave is made on Chromium. How I forgot that. Chromebooks are issued to universities, so it might be possibly they have set up multiple firewalls for protection. Let's hack one, if it possible. So, is Chrome OS ISO is openly available, so we can pen test that Chrome OS ISO. If it is available, na, Google does not. Yes, it does not provide public ISO file for Chrome OS itself. So if it is available, na, we can pen test that. Brave is a Chrome better, but better at ad blocking. You can say. Visit Google Chrome OS Flex download page and select option to download. They are. Acha, we can download Chrome OS Flex. Uh, okay, so we got another thing that we can uh, for download Chrome OS Flex. Oh, we got Internet Archive. There is no preview level for this item. Oh, we got something. Chrome OS, we got that from Internet Archive, and this website was not working 5 minutes before. I don't think there is any download link or something. Show all files. Okay, there are. We can do. I don't know these are authorized files or not, or they are actually the files. But let's do one thing. Let's save it. We will see that later. If we got a chance, na, we try to pen test this Chrome OS. It might be available because it was cracked by a while back. Yes, that is why it is available in Internet way back, na. That is why it is archived.
Time to use Chrome OS with so you will be buying 25,000 Chromebook. Brave is Chrome, okay. Or Fire OS. Yeah, that I don't know. Fire OS. There are much operating system. We will create one also. Linux distribution is an operating system developed as a fork for the open source of Project Chromium OS. Okay, it uses Linux kernel and integrate both a web browser perform container technology. How it looks. There is not that much. Use kernel. Okay, Fire OS best OS for your PC and laptop. So what's a flexible Chrome OS alternative? Okay, it's an alternative, no? It's not explicitly Chrome OS. So I think it is not that much secure. Okay, so we got to know that today that Chrome OS is much secured. What we were doing, on which topic we were, I forgot. We were on Shodan Docking, na? Or trace route we will have to perform. Array yaar. Let's get back to our topic, okay? So we will be doing basic, but the chats I am getting today, I don't think so. You need any kind of knowledge for uh, of this Shodan web browser. I'll become world's best pen tester, world's best pen tester for Wi-Fi by using Chromebook. Mark my words, chat. Nice. I have to show you something. This is it visible? You can buy this online. I'm using this Wi-Fi adapter. So anyone, if suggest me one thing. I'm not that much experience in Wi-Fi pen testing and all. So how do you hack a Wi-Fi? Like from starting, what are the ways to hack a Wi-Fi? Do you use explicitly tool that is available on GitHub or something? Do you use Wi-Fi? Wi-Fi is pretty old, but what do you use? Like hardware and software both, if anyone has knowledge too. एयर क्रैक एनजी तो यार उसके लिए हुआ ना, पासवर्ड क्रैकिंग के लिए. इनिशियल स्टार्टिंग से कैसे मतलब नेटवर्क स्कैनिंग इट नेटवर्क स्कैनिंग एंड ऑल. एयर क्रैक एनजी तो मैं यूज भी नहीं करता, मैं काउपैटी यूज करता हूँ. एयर क्रैक एनजी तो बहुत इट्स प्रीटी ओल्ड. बहुत बहुत पुराना हो गया यार. और मैं सजेस्ट करूंगा तो एयर क्रैक यूज भी मत करो, काउपैटी यूज करो. काउपैटी विद MD5 checksum बेस्ट. एयर क्रैक एनजी टू ऑटोमेटेड दिस प्रोसेस यूज वाईफाई. अरे नहीं यार, वाईफाई से नहीं हो पाता. मतलब हो जाता है पर अब जैसे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है वो क्या कहते हैं, WAP3 आ गया ना. WAP3 नहीं हो पाता. जैसे हम नेटवर्क डाउन करते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो किसी वाईफाई को डाउन करते हैं उसकी PSS आईडी से, तो काफ़ी टाइम के लिए WPA2 और 1 जो है काफ़ी टाइम के लिए डाउन होता था, पर WPA3 डाउन नहीं होता. तो हैंडशेक फाइल कैप्चर नहीं कर पाते. क्या ऑल्टर कुछ ढूंढा है उसके लिए अल्टरनेटिव? मैंने बहुत सर्च किया, मेरे को नहीं मिला. तो ये तो पता है ना सबको क्या है, दिख रहा है क्या? अरे यार एक तो ये चल जाता है. ये तो पता है ना सबको. मतलब हार्डवेयर भी डिवाइस भी तो कुछ स्कैनिंग के लिए तो यूज करते होगे. एविल्ट भाई वो तो वो है. दैट इज मतलब वो तो बाद के लिए हो गया ना, कि मतलब जब कुछ नहीं बचा तुम पासवर्ड हैंडशेक फाइल से कैप्चर नहीं कर पाए तो एविल ट्विन कर लिया. इट्स इफेक्टिव इन अ वे बट वो ही है ना, वो फिर मेंटेनेंस पेज पे ले जाता है. और आजकल लोग यार बहुत स्मार्ट है, वो नहीं डालते पासवर्ड. और लोग डाल भी देते, मैंने बहुत वाईफाई ऐसे हैक करे हैं. एविल ट्विन से ही मैंने करे हैं. वो मतलब वो मेंटेनेंस पेज दिखाता है कि और वेबसाइट इज मतलब वाईफाई इज अंडर मेंटेनेंस, और अपना आईडी पासवर्ड और वाईफाई अडेप्टर. यस, विच वाईफाई अडेप्टर यार? इट्स अ वाईफाई अडेप्टर. So you have to scan the Wi-Fi near you, na, in monitor mode. So this is a TP-Link Arch 200, which I have bought. Firstly, I was having uh, uh, there are n number of tools that is uh, I don't know where it is now. Humans are not our most vulnerable. Exactly.
द थिंग आई वाज। हाँ वो फिर वही है, मतलब मेरे को कोई ऐसा मेथड नहीं मिला। लाइक फ्लिपर जीरो तो है ही, देखो वो तो मतलब बेस्ट है। फ्लिपर जीरो से तो सेकंड्स में तुम वाईफाई हैक कर सकते हो, WPA 1 2 3 4 5 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो NIC यूज़ करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ करता है ना, उसको वाईफाई अडेप्टर की जरूरत है ना कुछ, उसमें सिर्फ डालना है कि ये वाईफाई हैक करना है और वो गया वाईफाई हैक। यार अभी मेरे को, हाँ एक और है, ये रहा। ये भी है जेब्रॉनिक्स का, पर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए है, ओनली 4G नेटवर्क्स। और ये वाला जो है ये 4G 5G दोनों के लिए है। हाँ वही, NFC तो यार वो कार्ड जैकिंग वगैरह के लिए काम आता है। पर उसके बाद मतलब फ्लिपर जीरो हैज़ अ गुड NIC। यू कैन मेक दैट फ्लिपर जीरो फ्रॉम अ रास्पबेरी पाई ऑल्सो, सस्ता पड़ेगा। कस्टम रास्पबेरी पाई को अगर डिज़ाइन करके तुम फ्लिपर जीरो भी बना सकते हो यार। वो भी तो लिनक्स ही है, फ्लिपर जीरो भी तो लिनक्स ही है यार, उसमें भी लिनक्स चल रहा है। ओके, हम बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक चले गए। सो स्टार्टिंग से चलते हैं, हमने कुछ भी, हाउ हाउ हैक वाईफाई। आई एम नॉट मच एजुकेटेड ऑन एडेप्टर्स। कोई बात नहीं यार, होनी चाहिए हर किसी की नॉलेज, हर चीज़ में नॉलेज, मतलब अगर हैकिंग में हो ना, स्पेशली हैकिंग में, तो कुछ भी हैक करना, हर डोमेन की नॉलेज। मतलब अगर मेरे से जैसे तुम, यू वर टॉकिंग अबाउट कि एविल ट्यून, मतलब कौन क्या इंटरेक्शन था वो मेटास्प्लॉइट वाला, ठीक है। आई थिंक सम इनबिल्ट अडेप्टर वर्क्स इफ यू आर लकी। इनबिल्ट अडेप्टर्स के अंदर मॉनिटर मोड ऑन नहीं होता, इनबिल्ट अडेप्टर्स के अंदर। और अगर तुम ISP यूज करोगे अपना, कि इफ आई एम यूजिंग माई राउटर फॉर, मतलब तो उस पर मॉनिटर मोड ऑन नहीं होता। सो यू हैव टू यूज एक्सटर्नल अडेप्टर, अभी तक जो मुझे पता है। बाकी क्या पता कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हो। सो लेट्स मूव टू शोडान वेब ब्राउजर। सो मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, वेब कैम्स, ठीक है। सो इफ यू सर्च दिस कीवर्ड ना, वेब कैम्स, 4 to 5 years ago, so there were n number of results around in lakh and crores. Inbuilt can only do one thing at a time. So mine works also, my past laptop also worked, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, आई डोंट नो। सो like 4 to 5 years back there were n number of results, like 1 lakh, 3 lakh, even in crores. But now webcams are much secured. Okay, so what we can see, let's see this GUI first, how it is working. I don't have this exploits page here because I don't have the premium. Although there is exploits page where you can explicitly see the vulnerabilities which you can use in a bad way or in a good way, your choice. So top countries that we have the hostages are from United States. Okay. Top ports that are open is 8081 and 443. 443 is unauthorized, I guess, unauthorization port. 443 कौन सा port होता है? Port. Stand, okay, HTTP, sorry, HTTP 403 होता है ना वो तो, HTTPS मैंने भी क्या सर्च किया यार। HTTPS 21 TCP 3389 है, 8085 भी TCP पोर्ट है। और टॉप ऑर्गेनाइजेशन मोजो होस्ट, लीजविप कनाडा, कोरियन टेलीकॉम, टेनेट एंड डच टेलीकॉम। और टॉप प्रोडक्ट्स, मतलब जो वेब सर्वर्स दे आर यूजिंग फॉर होस्टेजेस आर अपाचे, HTTPD। ओके, सो 8081 हो गया, ओके। 8081 इज HTTP। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, वेबकैम 7 HTTPD, वेबकैम XP। Top operating system, okay, so they are still using Windows, they still find Windows more secure than Ubuntu or Unix. So we can see top operating systems that they are using is 6 are Windows. So there are matlab very less amount of results. We have 57 results all over the world. But when I use Shodan in 2021 or 2022 na, so there are around crores results in crores. Okay, so this is basic. Okay, so let's talk about a particular IP. Okay, I don't promote you to like run a nmap scan or that target this IP na. We are just doing for study purpose. So host name is router ASUS. So we got a information that this IP is a ASUS router. It is using ASUS router. So it's ASUS domain asus.com. asus.com. ये क्या था? मैं ASUS को गलत ले रहा हूँ क्या यार?
इसका टीसीपी पोर्ट कैसे ओपन है? ये तो ऑथराइज्ड वेबसाइट है यार। मतलब कुछ गलत इंटरप्रेट किया गया मैंने? यार मेरे को स्ट्रीम्स पे ऐसे कोरियन। नहीं, उसका डोमेन चेक करो यार। asus.com। कोई सब डोमेन भी नहीं है, डायरेक्टली asus.com है। तो ये ओपन पोर्ट से आईपी एड्रेस के अगर मैं, अरे यार करना नहीं चाहिए, पर एनमैप्स का रिजल्ट तो हमारे पास है ही ना ऑलरेडी। पर ये सारे टारगेट रेंजेस के लिए, मतलब 1 से लेकर 24 तक होगा। कोरियन रिपब्लिक, ओके। सी ऑल। कोरियन टेलीकॉम। वल्नरेबिलिटीज लेटेस्ट हैं जो कि 2025 32728। In SSHD, open SSH before 10.0. Disable forwarding detective does not adhere to the documentation static. ओके, जो 2025 यानी कि 2024 के बाद जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका, मतलब अभी मैंने कोई वो नहीं करा रिव्यू। 2023 तक तो मेरे को नोन है। The PKCS feature in SSH agent in open SSH before 90. So anyone that is new, उसको मतलब वो नहीं होना चाहिए, वरी नहीं करना चाहिए। बाद में सारी वल्नरेबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे। इट्स जस्ट दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन माइट बी अ प्रॉक्सी। वही मैं कह रहा हूँ, asus.com के डायरेक्टली पोर्ट्स एक्सेसिबल कैसे हैं? एक तो द थिंग इज ना कि मैं जब ऑफ स्ट्रीम व्हेन आई एम फाइंडिंग समथिंग ना, आई डोंट गेट दिस मच ऑफ यू कैन से इंफॉर्मेशन दैट इज अट्रैक्टिंग मी टू बी अ बैड हैकर। कई बार मन करता है पेन टेस्टिंग करने का इस चीज़ों पे, पर ऑन स्ट्रीम मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कई बार कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि करके देखते हैं। और देन आई रिमेंबर दैट आई एम ऑन स्ट्रीम, आई एम लाइव। टीसीपी पोर्ट 80। एनजिंग सर्वर है, ओके। कोई एसएसएल सर्टिफिकेट भी नहीं है, मेरे को कुछ फिशी लग रहा है। इफ देर इज अ प्रॉक्सी, अगर तुम कह भी रहे हो माइट बी अ प्रॉक्सी, तो डायरेक्टली asus.com की प्रॉक्सी थोड़ी ना हो सकती है यार। वेब सर्वर्स ऐसे एनजिक्स और अपाचे एचटीटीपी सर्वर है यार। बुकमार्क, हाँ बुकमार्क। आई विल सी दैट लेटर। मतलब ऐसी 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 इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना कई बार यार कि बस लाइव स्ट्रीम पे नहीं कर पाता मैं। डन बुकमार्क। मैं इसका मैप एक्सेस नहीं कर पा रहा, रेगुलर व्यू, रॉ डेटा, मेंबरशिप, टाइमलाइन, हुईज भी नहीं कर सकता। समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर 500। ओके, सो एक पोर्ट होगा इसका 8443 और 8081। लेट्स 8081 देखते हैं। एच टी टी पी पोर्ट भी ओपन है यार। टीसीपी कनेक्शन टाइप HTML, सर्वर MJP स्ट्रीमर 0.2, हेडर्स भी मिल गए। asus वायरलेस राउटर टफ AX 5400। आई थिंक ये नहीं खुलेगा, इसमें ऑथराइजेशन मांगेगा। ओह, मैं बैक ही रिवर्ट बैक हो गया क्या? प्रोडक्ट asus वायरलेस राउटर टफ AX, ओके। Okay, so we got some information. Okay, so we are redirected to that asus वायरलेस राउटर जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, तो हाँ डिफरेंट होगा सब। देखो ना यहाँ पे लॉक्ड SSL सर्टिफिकेट है, ये लॉक्ड है, मतलब मैं बिना आईडी पासवर्ड के आई कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। बट द मेन डोमेन ऑफ asus.com, उस पे कोई SSL सर्टिफिकेट ही नहीं है। डे लाइट, क्या मैसेज था भाई, रिट्रैक्ट कर दिया यार। अब कुछ कर ही रहे हैं तो करके देख लेते हैं। मेरे को इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, मैं इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। हनी पॉट भी हो सकता है। इसका देखो यहाँ पे ASN ब्राज़ील होस्टेड है, ये चल क्या रहा है? यहाँ ब्राज़ील, हांगकांग, जर्मनी होस्टेड है, और शोडान दिखा रहा है कि ये कोरियन रिपब्लिक ऑफ सियोल में होस्टेड है। एसूस कंपनी कहाँ की है भाई? सर्च इज शोइंग 2 न्यू वल्नरेबिलिटीज ऑन द वेबसाइट। हाँ वही तो। ये अभी वल्नरेबल हुई है क्या? तभी पोर्ट ओपन है इसके।
कुछ हुआ है क्या? और मतलब कब की है रिपोर्ट देखें तो? डेट नहीं दिखती ना। पोर्ट 3022 सीवीज ऑल पोर्ट्स लेटेस्ट। सो 2025 के हैं। मल्टीपल आईपी कैन पॉइंट टू वन डोमेन, मैं समझ गया, पर यार तुम मेरी बात नहीं समझे जो मैं कह रहा हूँ। सर्च इज शोइंग टू न्यू वल्नरेबिलिटीज। कोई नहीं, बुकमार्क करते हैं इसे। मैं समझ गया that the daylight you are saying that multiple IP can point to one domain, but if the IP is pointing to a particular domain ना, so it that particular domain or that you can say that IP should have a SSL certificate. It can be vulnerable. ASUS is a Taiwan based, why is the server Seoul? वही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर if you see that DNS dumpster result ना, वो ब्राजील hosted दिखा रहा है मेजरली। ये कौन सी कंट्री है यार? विच कंट्री इज दिस? कोरिया? सियोल ही होगा, रिपब्लिक ऑफ सियोल। एक चीज़ और आती है इसमें लास्ट में, TXT रिकॉर्ड्स भी हैं। 101% अगर ये है तो फिर ये IP भी होगी यहाँ पे। ताइवान। सिमिलर डाउट। डे लाइट, कैन यू आंसर दैट? तुम बहुत पढ़े लिखे बंदे हो यार, प्लीज आंसर दैट। मेरा डाउट है। मैं बहुत बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मेरा ये डाउट है कि इफ कि I know that multiple IPs can point towards a particular or a common domain, but if it is, so it should have a SSL certificate na, to be secure. And also second thing, ASUS is a Taiwan based company, why it is showing Korean Republic of Seoul? And if we see in the DNS dumpster, why the hostage is seen in the Brazil, why it is showing Brazil? Okay, so Taiwan based है तो ताइवान दिखा रहा है, पर फर्स्ट जो अगर अभी ट्रेस राउट पढ़ेंगे ना, तो ट्रेस राउट में अगर हॉप 1 पढ़ोगे, पहला हॉप जो है वो ब्राजील का है। सो शोइंग 50 रिकॉर्ड्स आउट ऑफ 254, मोस्टली ताइवान है। अगर ASN चेक करें तो सारे ताइवान मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ताइवान बेस्ड है यार, ऑब्वियसली। बट इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को 14.38 8537 वाला पोर्ट यहाँ पे मिले? क्योंकि इफ दैट इज द केस ना, सो इसका फिर सब डोमेन, क्योंकि ये होस्ट और सब डोमेन जो है वल्नरेबल हो सकता है, क्योंकि ये सब डोमेन का वो दिखा रहा है, और 14.38 का सब डोमेन मिल गया तो वल्नरेबल हो सकता है 101%। इस टेलीपोटिका का देखता हूँ क्या सीन है। वही वही तो। सिमिलर थिंग आई एम टारगेटिंग। हाँ, अगर एक्सेस करके देखें, then you will answer the question. Okay, no problem. Let's try to access. पोर्ट कौन सा होता है इसका? 80 होता है ना? Nothing related to it on web.
अरे यार, अबे, is it treating me as web? Is it treating me as admin by default? अरे कनेक्शन सिक्योर नहीं है, कोई बात नहीं, हैक कर लो भाई मेरे को। वेब स्टेशन हैज बीन enabled टू फिनिश सेटिंग अप योर वेबसाइट। यार मैं कुछ कंफ्यूज हूँ यार, मेरे को ये एडमिन की तरह ट्रीट कर रहा है। टू फिनिश सेटिंग अप योर वेबसाइट प्लीज द वेब सर्विसेज सेक्शन ऑफ डीएसएम हेल्प। कुछ फॉल्ट चल रहा है क्या, मेंटेनेंस में है क्या? डे लाइट बताओ यार। डोंट यू थिंक साइबर सिक्योरिटी has lately become a trend? Yes, when I have started trend streaming ना, it becomes trend. यार ऐसी चीजें मिलेंगी तो यार ट्रेंड ऑब्वियसली होगा साइबर सिक्योरिटी। क्यों कोडिंग करनी है यार, क्यों डेवलपमेंट करनी है? मेंटेनेंस हो सकता है, मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि दिस वेबसाइट इज ट्रीटिंग मी। अगर मैं बर्ब सूट के साथ नेटवर्क इंटरसेप्ट करूँ, बर्ब सूट इसमें है नहीं मेरे पास अभी। अब मैं बर्ब सूट के साथ नेटवर्क इंटरसेप्ट करूँ ना, तो आई कैन सी दैट अगर मैं ट्रेस राउट भी चलाता हूँ इस पे, ओके, तो नम कॉन्सेप्ट तो हम सीख, पिंग चल नहीं रहा है इस पे, तो इसका मतलब उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब सडनली ऐसी चीजें मिली है कि इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट हो गया मैं। ट्रेस राउट तो वैसे भी करना है ना यार, करके देखते हैं कितने होप्स आ रहे हैं, पता चल जाएगा। पेज क्लिप बोर्ड, भाई ट्रेस राउट कनेक्ट कर रहा है। मेरा आईपी भी है क्या इसके अंदर? हाँ मेरा भी है। तो ये सिमिलर रिजल्ट्स होंगे, ट्रेस राउट के वही रिजल्ट्स होंगे जो डीएनएस डंपस्टर के आए हैं। चेक ऑन वेबसाइट 2, साइट तो ओके है। हाँ वही तो। अब ये ऐसी चीजें मिल जाती है ना स्ट्रीम पे, मैं क्या बताऊँ। 112174911। हाँ ये तो इसी का ही है यार, डीएनएस डंपस्टर भी तो ट्रेस आउट करके हॉप करता है ना, तो वही रिजल्ट्स मेरे को यहाँ मिल रहे हैं। तो ट्रेस राउट से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वेबसाइट से, पर मैं पिंग कर रहा हूँ तो नहीं हो रही। आई एम ऑल्सो अनेबल टू फिगर दिस आउट, मे बी दिस इज नॉट अ मेंटेनेंस इशू, इट कैन बी सम मिसकॉन्फ़िगरेशन। इफ इट इज ना, सो मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं एक्सप्लॉइट कर दूंगा इसे। शुड आई गो ऑफ स्ट्रीम? या सबसे पहले तो तुम ही लोग कर लो, क्या पता तुम खोल के बैठे हो सेटअप कि मेरे से पहले तुम एक्सप्लॉइट कर दो। थोड़ा सा मतलब मिक्स हिंट्स मिले हैं मेरे को। एसूस वेबसाइट वर्किंग है, पर मैंने एचटीटीपी पोर्ट जब इसका एक्सेस करने को देखा, तो इट्स सेइंग दैट वेब स्टेशन हैज बीन enabled टू फिनिश सेटिंग अप योर वेबसाइट प्लीज सी द वेब सर्विस सेक्शन। सो वेब स्टेशन हैज बीन enabled, इसका मतलब वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर थी, उसके बाद वेब स्टेशन इनेबल किया गया है, और उसके बाद वेब सर्विस सेक्शन ऑफ डीएसएम हेल्प। अरे यार, इट कुड बी सम कुड इट बी दैट सम चेंज्ड एंड फॉरवर्ड टू फिक्स। वही तो, और ये लाइव है यार, कोई वीबैक मशीन के अंदर भी नहीं है कि पहले कोई वल्नरेबिलिटी है, लाइव है। शुड वी गो इन डीपर, या छोड़ दें इसे? मेरे को हाँ, क्योंकि होस्ट नेम देखोगे ना, routers.asus.com है। हाँ ये क्यों नहीं देखा मैंने? ओके, तो हाँ एग्जैक्टली अब मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई। asus.com जो पूरा एक डोमेन है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आया है, ये प्रॉब्लम routers.asus.com के अंदर है। सो यूज ऑफ asus राउटर शोज दैट इट कैन बी साइट दैट। हाँ, तो राउटर्स की जो इनकी वेबसाइट है, यू कैन से सब डोमेन, ये डोमेन है asus.com। asus.com वर्क फाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेन डोमेन है, ये काम करेगा। पर इनकी जो वेबसाइट है routers.asus.com, मेरे को वो चेक करनी पड़ेगी। साइट कांट बी रीच्ड, दिक्कत इस वेबसाइट के अंदर है।
A true thruster always goes deeper. अरे दिख गई प्रॉब्लम भाई, दिख गई। कोई हैक वैक नहीं कर सकते, अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट। फिशी जब लगा मेरे को, मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ कि मैंने होस्ट देखा बस कि asus.com है। asus.com इज वर्किंग फाइन, पर उसके अंदर एक सब डोमेन है routers.asus.com। पर हाँ, इनके तरफ से एक एरर ये है कि इनका एचटीटीपी पोर्ट ओपन है और कोई भी एज एडमिन एक्ट कर सकता है, पर इस वेबसाइट, अरे यार, इस वेबसाइट के अंदर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। इफ आई ट्राई टू इंस्पेक्ट समथिंग, कुछ नहीं है भाई, बेसिक है, कुछ नहीं कर पा रहा मैं। ना कोई अगर मैं एडमिन की तरफ भी ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे कम से कम मेरा लॉगिन पोर्टल या एडमिन तो देते। ये फिगर्ड आउट, वही, ये चीज़ क्लियर कर ली मैंने। ये मेरे को पहले से ही पता था, मैं तो जब जस्ट मज़े ले रहा था। पर जब मेरे देखा ना मैं इस पे होस्ट नेम्स राउटर डॉट एसूस डॉट कॉम से, तो प्रॉब्लम इज विद दिस होस्ट, और यू कैन से द सब डोमेन। पूरी डोमेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये तो मेरे को, और जो वाली चीज़ थी कि मल्टीपल आईपी कैन बी पिन टू दिस डोमेन, वो हाँ ट्रू है, क्योंकि डोमेन से बहुत सारे सब डोमेन्स कनेक्टेड होती हैं। सो अगर हम इसको ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, पर कोई बात नहीं, सही चीज़ मिली है। ये ऐसे टाइम पे मिलती है मेरे को ये चीज़ें। तो ये तुम्हारा asus.com है, ठीक है, ये तुम्हारा asus.com है। ये परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी सब डोमेन्स हैं और यू कैन से होस्ट नेम्स हैं उसके, ठीक है। उसके अंदर एक राउटर्स डॉट एसूस डॉट कॉम है, जो कि शायद मेंटेनेंस के अंडर अभी है। क्या कह रहा है, साइट का डीएनएस एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, ओके, डीएनएस एड्रेस ही नहीं मिल रहा। तो आई थिंक दिस, तो हो भी सकता है कि राउटर्स डॉट एसूस डॉट कॉम ये जो डीएनएस है और यू कैन से सब डोमेन है, आर्काइव्ड है। टेक डाउन द साइट एंड टेक इट अप ट्यूनियन टू द मेन डोमेन। डे लाइट कहाँ चले गए भाई, क्या कहना है इस पे। सो हाँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो तुम्हारा डोमेन है, ये ताइवान बेस्ड ही है, ठीक है। ऑल दो इसका मेन वेब सर्वर यू कैन से वो ब्राज़ील लिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और ये जो तुम्हारा राउटर्स डॉट एसूस डॉट कॉम है, ये सियोल में है, दैट इज़ कोरिया। सो ये इस आईपी को दिखा रहा है, और हाँ वो सही बात है कि मल्टीपल आईपीज जो हैं एक सब मतलब एक डोमेन को टारगेट नहीं, लिंक हो सकती हैं उससे, क्योंकि इससे बहुत सारे सब डोमेन्स मतलब कनेक्टेड हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट आईसीएमपी ना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, सो वही यही चीज़ देखता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ से एरर दे रही है। Station is just a virtual hosting software. I think what you are seeing is the page where nothing is hosted and it's the default configuration page. हाँ वही चीज़, वही चीज़। डिफ़ॉल्ट को अगर कुछ होता, लेकिन दिक्कत ये है ना, अगर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज भी है तो व्हाई इट इज़ एक्टिंग, मतलब वो मेरे को एडमिन की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। दिस साइट, दिस साइट और दिस साइट, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ साइट तो दोनों सेम ही है ना, क्योंकि ये नॉर्मल पे है, वो स्पोर्ट पे है। कुछ नहीं है भाई, इमेज नो डिस्प्ले, कुछ भी नहीं है। अरे अरे अरे, हेडर है क्या। आई आई थिंक हेडर्स हैं, पर कुछ नहीं मिलेगा, स्क्रॉल बार टेक्स्ट और वही नॉर्मल हेडर्स मिले हैं। एडमिन वन, एडमिन वाली है भाई, यही है, ये मेरे को एडमिन की तरह ट्रीट कर रही है, पर इसमें कुछ नहीं मिला। हेडर देख लिया, कुछ भी नहीं है, मतलब हेडर है हालांकि यूज़ कर सकते हैं, पर नॉट दैट मच ऑफ यूज़। सिंपल एचटीएमएल वेबसाइट है ये, मतलब एक तरीके से रीडायरेक्शन हो सकता है, और शायद ये वेबसाइट जैसे जोरो ने भी कहा कि ये वर्चुअल होस्टिंग सॉफ्टवेयर है, एक वेब स्टेशन है, तो शायद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज भी हो सकता है। और जो भी एसूस, मतलब ये गलत चीज़ है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, सिनोलॉजी वेब स्टेशन। हाँ, तो ये गलत चीज़ है कि पब्लिकली एक्सेसिबल है ना। अगर ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज भी है तो दिस पेज शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू द people working in it's not treating you as an admin, it's just telling by the default page to configure it by the admin page, just like nginx and http page of apache। नो, वी कैन नॉट बग दिस, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है मेंटेनेंस होने के बाद। हाँ वही ना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यस सी, इफ कॉन्फ़िगरेशन पेज भी है, ओके आई एम, मतलब मैं तुम्हारी बात बड़ी कर दी, इफ कॉन्फ़िगरेशन पेज भी है तो व्हाई इट इज शोन टू अस, है ना। दे कैन सिंपली क्लोज दिस पोर्ट ना, एचटीटीपी पोर्ट ओपन ही क्यों है, मतलब या तो देखो देयर इज अ लूप होल, although I don't know whether it can be I don't think so it can be exploited because ये वेबसाइट अब आर्काइव्ड है, क्योंकि इसका अगर देखोगे ना डीएनएस ही, वो कह रहा है डीएनएस एरर,
कंट्रोल शिफ्ट, ये रहा डीएनएस कैंट बी रीच, तो इसका मतलब वेबसाइट इन्होंने आर्काइव कर दिया, दिस इज नो लॉन्गर ऑफ यूज, ओके। बट वही चीज है ना, अगर तुम किसी चीज को, इफ यू हैव अ कंपनी और किसी चीज को तुम आर्काइव करते हो तो उसकी हिस्ट्री पूरी तरीके से क्लीन करनी होती है। मे बी रॉन्ग पोर्ट इज फॉरवर्डेड, नहीं यार, पोर्ट डायरेक्ट 80 यार, 80 पोर्ट ओपन है, इसमें फॉरवर्ड कहाँ से आया, डायरेक्ट एचटीटीपी पोर्ट ही ओपन है। जोरो कैन, मतलब if I am right or wrong you can tell कि I know that this is a default configuration page and it is not treating me as an admin, और ये सिर्फ एक configuration page है, but it's still a loophole, और वो ना कि wrong ना कि they have still open ports on their services that are not currently running or they have archived. Am I right or wrong? That I have a company, मैंने कोई सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी तो I have to clear the history ना, कोई भी ओपन पोर्ट्स नहीं होने चाहिए उस पर। आज सब पुराने व्यूअरशिप है, आज न्यू व्यूअरशिप नहीं है, कल तो बहुत आए थे। जोरो वेयर आर यू यार, हम इम्पोर्टेंट फेज पे थे बहुत। सो हाँ, ये जो है routers.asus.com, दे कैन बी ओपन पोर्ट्स हैं, हालांकि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी मेंटेनेंस के बाद पोर्ट्स ओपन रह गए हों, ओके। और अभी करंटली तो ये अनआर्काइव्ड, मतलब आर्काइव्ड है वेबसाइट। सर्च अबाउट इट फॉर लेटेस्ट स्टेटस, चेक कर लेते हैं। There is a web, yeah, if the software has some vulnerability we can exploit, but before that we are not, we are to enumerate deeper for version of similar kind, yes exactly। हमें उसके वेब सर्वर में भी मिसकॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी पड़ेगी, अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट 80 और 443 और भी बहुत सारे पोर्ट से ओपन है तो मैं डायरेक्टली कुछ भी करके एक्सप्लॉइट कर दूंगा। आई हैव टू फाइंड मोर, मतलब वल्नरेबिलिटीज, और ताकि उस पर मतलब और इन्यूमरेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उस पर एस्केलेशन ले सकूँ। इट्स यू आर राइट, बट माई पॉइंट इज, all the thing apart from this hacking and all, my point is if some service is discontinued, okay, so as a company you should have a responsibility that if there is after maintenance and it is archive, because किसी सर्विस को आर्काइव करना पड़ता है, उसकी पहले मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसे आर्काइव करोगे, कोई भी हिस्ट्री नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आफ्टर मेंटेनेंस देयर आर सम पोर्ट्स दैट आर स्टिल ओपन, सो दैट इज रॉन्ग ना, इन माय ओपिनियन इट्स रॉन्ग। वेयर वर वी, ओके। शोडान का हमें करना था पर हमने काफ़ी कुछ आज, और ये मेरे को, ये सर्च रिजल्ट मुझे वेबकैम्स में क्यों, या यू आर राइट शुडंट बी एक्सपोज टू, हाँ पर मैंने वेबकैम सर्च किया था, इसमें मेरे को राउटर्स क्यों मिले? आई स्टिल कांट फाइंड आउट। आई हैव सर्च फॉर वेबकैम्स और उसमें मेरे को सबसे पहले रिसर्च रिजल्ट राउटर्स मिले। बहुत सारी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को उसमें फिशी लगी, मतलब asus.com पहले मुझे लग रहा था कि कुछ शायद लाइव, जिस टाइम हम स्ट्रीम कर रहे थे कुछ लाइव अटैक हुआ है, हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, पर अगर लाइव अटैक होता तो उनकी वेबसाइट डाउन होती, वेबसाइट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका डोमेन सही था, पर उनका एक सब डोमेन था routers.asus.com जो कि अब उन्होंने आर्काइव कर दिया, आई गेस, क्योंकि इसका डीएनएस उन्हें मिल ही नहीं रहा, तो बट स्टिल उसके पोर्ट्स ओपन थे, many if and buts, है ना, we have to join the dots, we have to map everything। I will see it in detail कि कुछ इस पे कर सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत कुछ 100-200 रुपये अगर बग बाउंटी के मिल जाए। But I don't know, might be some lazy developer use this for remote management, it's a virtual hosting thing ना, virtual hosting let's just see ना, virtual hosting के लिए है, नहीं यार होस्टिंग वर्चुअल नहीं है, हाँ मतलब है तो वर्चुअल ही, पर होस्टिंग जो होस्टिंग है डायरेक्ट asus.com पे ही है। So here is my theory, search it up, I think you want to know what it says। हाँ राउटर्स वाला सर्च कर रहे थे ना, राउटर्स asus वेब, तो फायदा नहीं है कोई, डाउन asusrouter.com पोर्टल डाउन 3 जनवरी 2025, मतलब उसके बाद से पोर्ट ओपन है। Not responding, please sort out, they have no, okay, so I to better assist you with the issue, router model and all, मतलब they have not addressed this, they have not addressed this,
Asus down, current problem and all. Asus.com is Asus right down. Troubleshooting. I am not able. No. www.asusrouter.com. But we have the website called router.asus.com. इसको भी सर्च कर लेते हैं. दोनों ही वेबसाइट के डीएनएस एरर आ रहा है. It's a old news. Okay, you are telling this web station is virtual hosting software, huh? Yes. Okay, what we were doing? We are again off topic completely, and I have to end the stream to 12 because I have important work tomorrow. I have to wake up early. Okay, so we were on Shodan docking. हमने एक another problem that I have faced that I have searched for webcams. Why it is showing me routers? Routers IP address instead of direct access. Today there are no new people that have joined. Only the old one have. I thought today will be like tomorrow. I have like live watching of 30 people. I don't know why. I think people are still. This was found. Nice. Continuous viewership of 5. It's good. So tomorrow, yesterday, I think I have got 30 new subscribers, 170 to 200 and only one stream of pointers. And yesterday we were discussing simple pointers, and now we are discussing about hacking asus.com. How time changes. Okay, so let's move to Shodan docking. Na? We have taken much time. Where are Shodan docs? Okay. There's a possibility we can find vulnerable things now. Okay, because it's yesterday. Yesterday I have got 30 new subscribers. Okay, now we will be finding. There's a possibility we can find something. Okay, one more website that I have got is this. So if anyone want to go for bug bounty and all illegally, lol, we got so dragged away. So if someone want to go for bug bounty and all, I don't know it is openly available or not, but there are around 1,000 Google Docs that you can use in your search engine for finding vulnerable okay, what you can say website, because you see that na your triple IT Kalyani website, I got that from the simple doc that is in URL php question mark id is equals to 0. I have got that from there. So you can I think I have given this website in the YouTube community post. It's a good website. You can I don't have that much time to search for each and every Google doc, but if you have time na, if you are curious, you can search each and everything and you will get n number of vulnerable things, especially the websites of Bangladesh. They are so much I got a I think off stream, that was off stream, I got a website of their Bangladesh what the bank. I have got a website of a bank, and in which their database was open. There was a misconfiguration in the SQL query. There was some kind, but I have not exploited that. Okay, so it's on your own risk. If you want to do that, you can. But this list na, this is of very much of use. Okay, can we see one webcam today? If you want to see webcam, अरे बहुत simple है यार, बहुत simple है. उसमें कुछ भी नहीं करना. कोई मैं डॉर्क भी नहीं लिखूंगा. सिंपल वेबकैम XP5 पहला लिंक आया, उस पर क्लिक करो. शायद ये ऑलवेज ओपन है यार, पब्लिकली एक्सेसिबल है. यस, वही ना, डेटाबेस मिसकॉन्फ़िगरेशन था उनका. कोई बैंक, अच्छा बैंक था. भाई कौन था वेबकैम देखना था, जैसे देख लो भाई. और
एक चीज़ और दिखाता हूँ यार, मतलब फिर ऑफ टॉपिक जा रहे हैं पर बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, you don't know ना where is the location. If you want to find the location ना, just take the screenshot and paste it in the Google Images. शायद ये मैं फिर भूल गया क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका इसका ओसेंट। आई डोंट नो, इट्स अ इस्लामिक कंट्री बट आई डोंट नो वेयर इट इज़। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, मेरे में स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। प्रिंट स्क्रीन, वेयर इज प्रिंट स्क्रीन माय लैपटॉप। ओके, screenshot is captured, but where it is captured? Okay, if we go Google Images, it's a some kind of OSINT you can say. अरे image link. Okay, I have to turn off my screen to find that uh, screenshot. Where it is? Uh, where the screenshot is saved here? Saved on the desktop. अरे location कहाँ पे है? Wait a minute. Screenshot. View image. Copy, copy, copy. No option for copying the image. Where is Google Images? Not able to drag this, drag and drop. Recent में सेव हो गया. Okay, upload a file. Recent, screenshot, select. Motivational quotes. Hi brother. J picture screenshot. Okay. SQL is used for dating store. Okay. Dating store. Okay. Storing data. I am got fumbled. Sorry. So the browser suggests the user might be engaged in the activities. No, no, no. Arre, where it is the where the image here? Can I not crop this till here? अरे वेबकैम चला गया ये. ये इंडेक्स यूज करें क्या? माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल ना. आई एम जस्ट गिव मी अ मिनट. सेलेक्ट व्हिच क्वेरी डिड यू यूज फॉर द दैट बैंक साइट. अरे आई डोंट नो यार, रैंडमली कर रहा था मैंने सेव भी किया था, मैं दिखाता हूँ अगर होगा तो. PHP क्वेरी था यार कुछ, मतलब नॉट इन द डेटाबेस ऑफ दैट वेबसाइट बट आई गॉट अ डेट ओपन डेटाबेस जिसमें मतलब क्लाइंट, मतलब नॉट क्लाइंट, मतलब कस्टमर डिटेल्स थे. और डिटेल्स भी मतलब आई डोंट नो कि किस हद तक यूज़ किए जा सकते थे बट काफ़ी डिटेल्स थे. नॉट मतलब स्ट्रिक्टली फॉर द बैंक नेम, बैंक अकाउंट एंड ऑल, बट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फिजिकल एड्रेस तो था ही उसमें, और ओपनली पब्लिकली अवेलेबल था. अब मेरे को वेबसाइट मिलती है, मतलब आई डोंट नो आई कैन शो यू दैट ऑन लाइव और नॉट यार. प्रॉब्लम इस चीज़ की है ना कि बहुत सारी चीज़ें लाइव नहीं दिखा सकते, है ना. कोई डेलिबरेटली टारगेट करने लगे मेरे को यार, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ. अरे क्रॉप नहीं कर सकते कैसे? आई एम नॉट एबल टू यूज़. यार मैं ओसेंट तुम्हें करके देखा था, अच्छी चीज़ थी. रिसेंट, सेलेक्ट, एक पार्ट सर्च करना है यार मेरे को इसका. हालांकि AI पावर्ड सर्च है, नहीं दिखाया. मैंने और छोटा करा ऐसा. जस्ट राइट इन डिस्कॉर्ड एंड डिलीट. एक मिनट, मेरे को आई हैव टू फाइंड दैट. लेट मी जस्ट सी. ओके, वी हैव गॉट दैट. So let me just turn on my screen. So this is how, this was the screenshot that I have captured now. Okay, so I have used Google Images to find out which place it is. So this image is a screenshot of a live webcam showing the central area of Novi Bazar. Novi Bazar means Naya Bazar,
you can say. So Nui Bazaar is located in Rasaka district, surrounded by mountains such as Golija and this. The city, I don't know. Okay, so this is in the wet streets and reflection by, I think this is Serbia. Yes, a city in southwestern Serbia. So this is how you can use the power of OSINT, and they have different sources, I guess. Hmm. So if you want to find some kind of webcam ना, you can just do webcam XP, तो वैसे ही मिल जाते हैं webcam वगैरह तो. Let me find that query. अभी देखते हैं उसे कहाँ पे है. इसी में से था I guess. PHP query था or something. But the problem is query search करने पे ना direct नहीं मिलेगा. कम से कम you have to go or scroll around 10 pages. सब end में जाके कहीं वो मिलेगा. अब I didn't have that bookmark यार. Bookmark कर देता इससे तो अच्छा था. हाँ सिंपल PHP query थी वैसे तो. Site PHP. If I got ना I will tell. अगर मुझे मिला I will tell that in Discord, no problem. Wow, wow. रहने दो सर, क्या रहने दो भाई. सर्वर मत बोलो यार, इतना बड़ा नहीं हुआ यार, बहुत कम, मेरी 14 ईयर्स का ही तो हुआ. सो आज की स्ट्रीम एंड करेंगे यार, क्योंकि मेरे को कल काम है. पर आज हमें शोडान डॉकिंग खत्म करना था, बट वी गॉट वेरी वेरी मच ऑफ टॉपिक टुडे. शोडान डॉकिंग, लेट्स देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं. सो लास्ट से चलेंगे. सबसे पहले डेटाबेस एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं. सो माई एसक्यूएल का पोर्ट 3306 है. सबसे पहले इसी को सर्च करते हैं. कॉपी पेस्ट. सो एक चीज़ आई विल सजेस्ट वन थिंग, कि जितने भी डॉक्स वगैरह हैं, if you just search them ना, so you don't need to remember them. You can, if you are giving some kind of exam or something और कुछ करना है तो you should create a web browser, मतलब कुछ web browser choose कर लो एक, और you should create a bookmark or something. हर चीज़ का जो भी तुम्हें important मिले उसका bookmark या screenshot रखो. यूज़ मतलब एप्स लाइक नोशन, ऑब्सीडियन एंड वन नोट, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो. उतना तुम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग में यू कैन एक्सेल, बिकॉज देयर आर लॉट मच ऑफ टूल्स और समथिंग कि तुम हर चीज़ को याद रख सको. ठीक है. सो मेरा तो ये सजेशन है. ओके, वी गॉट समथिंग. So 2 lakh 12 no 21 lakh 28,937 search results. Mostly are from China, then United States. Top organization Allium Computing Co. Ltd. Unified Layer. Uh, if we search more ना, इंडिया नहीं है क्या? इंडिया एसक्यूएल यूज कर रहा है क्या अभी भी? हमने अच्छा एसक्यूएल में ही तो है यार, तो इंडिया होना चाहिए था, कहीं तो होता. आईएन मेरे को दिख ही नहीं रहा. नो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा चाइना है. Can you just show how to use any one query? I mean, how to search, just copy paste it or what? हाँ, I will tell you. Wait a minute. Like, let's take a random query. Let's take a PHP query only. So, see this. So there in website, na, say there are some kind of MySQL dump or database leakage. So you can exploit them. So google.com. You can just directly, if you don't know about anything ना, so you cannot do chat GPT because chat GPT नहीं बताएगा. You can use AI like Claude, you can use a pentest GPT, you can use, they will tell how to use them. So मैंने directly use किया है. So I have got two websites. लो एक मेरे को vulnerable website मिली है. I think इसमें तुम्हारा वो चल जाएगा. और ये टेस्टिंग के लिए वेबसाइट है. ओके, ये टेस्टिंग के लिए है. और ये वाली वेबसाइट खुल ही नहीं रही. मेरे को एग्जैक्ट उसकी क्वेरी, लेट मी जस्ट मेक इट इन URL PHP क्वेश्चन मार्क ID. अरे
ये भी टेस्टिंग वेबसाइट है क्या? Trusted friend I have ever had and I can never supplied argument is not my valid as my SQL result resource keeper out of many real mischief and she is luckily too poor to and हाँ किसी ने लव स्टोरी लिख रखी है यार अपनी यहाँ पे। वाओ, क्या मिल जाता है। She is luckily too poor to be in MySQL dump permission to copyright holder found at the beginning of this work. ORA00 unexpected end of SQL command we kept from it by knowing that his mother and aunt wished him to Mercury versions. Let me discard Jane's picture to herself a happy evening in the subject of honor or credited. ये कोई स्टोरी इसने टेक्निकल वे में फ्रेम कर रखी है, मतलब एसक्यूएल स्टोरी बना रखी है। Lydia will never be easy until has exposed herself in some public easier to guest books afford and still continue to suffer. He had to endure. हाँ, ये क्या है भाई, स्टोरी है क्या पूरी? सो ये कोई टेस्टिंग वेबसाइट नहीं, किसी ने डेलिबरेटली बना रखा है, इसमें कमेंट डाल रखा है। स्टोरी है या सीक्रेट कोड? वही मतलब मिक्स है, स्टोरी है मतलब इसे इंटरप्रेट मतलब डिक्रिप्ट करना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। कोई नहीं, मैं हाँ वो कोई क्वेरी बना रहा था यार, मैं भूल गया। इन URL PHP क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल्स टू, आई थिंक यही था। नहीं ये नहीं है। uh, और एक देयर इज नो वन गर्ल, देयर आई थिंक he or she is talking, मतलब he obviously he is talking about 2 to 3 girls और सबकी अलग अलग स्टोरी बता रहा है। अरे यही क्वेरी था क्या यार, PHP ID 0 index.php इन टाइटल, टाइटल तो नहीं होगा ऑब्वियसली। लेट्स फाइंड इट हेयर यार, कहीं तो था, इसी तरीके से था। PHP ID इज इक्वल्स टू, एक मिनट, जस्ट गिव मी टाइम, मैंने लिखा था कहीं, मैं देखता हूँ। Ever since I was a kid, I need to... मैंने वन नोट या कहीं तो मैंने मेंशन किया था यार। यही था, इन URL PHP, कोट्स नहीं आएंगे बस। इन URL PHP, ओके कोलन आएगा। नहीं एडमिन नहीं आएगा। PHP क्वेश्चन मार्क ID, शायद ये था। हाँ अब आ रहा है ना यहाँ पे, आई एम नॉट अ रोबोट। तो जब ये आ जाए तो उसका मतलब तुम्हारा डॉग अच्छे से काम करेगा। बैंक डिटेल्स LR डेना होटल, ओके सो वो बांग्लादेश वाला तो आई डोंट नो कि, यार एक तो मैं ना नाम गलत लेता हूँ, मेरे को नाम लेने नहीं चाहिए, मैं किस दिन फंसूंगा बहुत गंदा। Bhai Zoroya, I am 16. Where should I start? I am interested in cybersecurity. Bye guys, I am leaving. Good night. Okay, I am just also ending the stream यार, 5 मिनट्स में मैं स्ट्रीम रैप अप ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लान डिस्कस करूंगा कल का और आगे आने वाले टाइम का। सो ये था वो, कौन मेरे से पूछ रहा था, जस्ट राइट द कोड इन डिस्कॉर्ड। हाँ यही था भाई वो, इन URL PHP ID, और शायद यार मैं ना, आई विल नॉट टेक नेम फ्रॉम फर्दर, यू कैन सर्च दिस क्वेरी एंड फाइंड योर सेल्फ, दैट्स अ गुड वे, है ना। मैं नाम गलत लेता हूँ, मैं फंसूंगा किस दिन। सो लेट्स एंड द स्ट्रीम टुडे क्योंकि मेरे को भी कल काम है। ओके सो वी विल कंटिन्यू दिस स्ट्रीम नाउ। कर लो यार हैक, क्या करोगे मेरे को हैक करके, पैसे ही नहीं है, हैं थोड़े बहुत हैं, पर ये फिर गड़बड़ कर रहा है। लाइट चल गया। सो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा चैनल।
कंटेंट वाइज खत्म हो चुका है, मैं भी स्ट्रीम, आई विल जस्ट रैप अप द स्ट्रीम, बट मैं एक चीज़ डिस्कस करनी थी। पोस्ट कहाँ गई? ओके, सो कहाँ गया ये रहा। तो आज क्या है, मतलब अब तो नेक्स्ट डेट आ गया ना 10, सो 11 यानी कि टुमारो वी विल बी हैविंग स्ट्रीम, मींस ट्यूसडे, यानी कि अब तो 12 बज गए यार, ऑब्वियसली मेरे क्यों ही इसका आंसर कर दो। Where should I start? I'm interested in cyber security. In which field you are cyber, मतलब interested, मतलब blue teaming, GRC, red teaming, which field? So uh, we will be having next three जो streams हैं हमारी, 9 आज हो गया कवर, जो नेक्स्ट 2 स्ट्रीम्स है 11 नवंबर और 14 नवंबर वो सी प्रोग्रामिंग की होंगी। उसके बाद अगला सैटरडे संडे यानी कि 15 और 16 नवंबर वी विल बी कंटिन्यूइंग अगेन फ्रॉम दिस शोडान एंड गूगल। आज नहीं हो पाया क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स मिली थी, मतलब बहुत मज़ा आया भाई। कुछ कुछ तो कर किया जा सकता है, पर टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, वी हैव टाइम बाउंडेशन एंड वी हैव द बाउंडेशन कि व्हाट कैन आई शो यू ऑन द स्ट्रीम और व्हाट कैन नॉट, ये भी होता है। सो अगर इफ आई फाइंड बेसिक हैकिंग एंड बैकडोर्स, डोंट आई डोंट वॉच व्हाट इज इट कनेक्टेड टू बैकडोरिंग। तो बैकडोरिंग, लेट मी एक्सप्लेन, बैकडोरिंग जब करते हैं जब यू आर मतलब हैक द सिस्टम एंड यू डोंट वांट टू डिस्कनेक्ट ना, यू हैव क्रिएटेड अ बैकडोर कि अगर मैंने एक बार सिस्टम को हैक कर लिया तो मैं उसके अंदर दोबारा एंटर कर सकता हूँ, तो मेरे को सारे प्रोसीजर्स दोबारा ना फॉलो करने पड़े, उसको बैकडोरिंग कहते हैं। बेसिक हैकिंग मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग यार, वीएपीटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसको ऑफिशियली ये कहते हैं। जॉब रोल्स वगैरह ट्राई करोगे तो यही होगा। तो उसके लिए वही है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर तुम इस पे आ जाना जो मैं कर रहा हूँ अभी, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड ऑल, और तुम साथ साइड बाय साइड भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेटवर्किंग वगैरह के लिए बता दूंगा, कोई बुक मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा। और वो चीज़ जैसे आप अभी हमें जो कुछ भी एक्सप्लॉइट या कुछ भी मिला, अगर मुझे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, सो वी कैन हैव अ सेशन ऑन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पे शायद कॉल कर सकते हैं ना, कॉलिंग का ऑप्शन होता है डिस्कॉर्ड पे, आई डोंट नो, वीसी होता है ना, वीसी कुछ तो कहते हैं यार शॉर्ट फॉर्म में, सो वी कैन डू दैट। उस पे लाइव आना, देन आई विल डिस्कस, अगर किसी को करना हो एक्सप्लॉइट वगैरह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कर लिया है वैसे, ओके नो प्रॉब्लम। सो उस पे करेंगे अगर कुछ मेरे को मिलता है ना, जैसे अगर कल स्ट्रीम, मतलब कल तो क्या मतलब 12 बज गए, तो ऑब्वियसली परसों या कल जो भी तुम उसे कहो स्ट्रीम है, 11 को है स्ट्रीम। सो आज रात को मैं लाइव नहीं आऊँगा, अगर ऑफिशियली वॉइस चैट, वही वॉइस चैट वीसी, तो उस पे आके देन वी विल डिस्कस कि क्या किया जा सकता है। राउटर्स वाले पे तो आई गेस नहीं किया जा सकता, बट जो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे ना सर्च क्वेरीज दिखेंगे, अभी यार सर्च किया था मैंने google.com पे, कोई नहीं दोबारा करते हैं, ये वाला। सो खुल जा भाई, ये वाले जितने भी है ना, ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन से यू कैन बाईपास दिस वेबसाइट। नाम नहीं लूँगा मैं डेलिबरेटली, किसे करेंगे पर किसी ना किसी को तो करेंगे, 101%। देखते हैं इफ़ वी हैव परमिशन और नॉट टू डू, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी स्क्रीन ऑफ थी क्या? कोई नहीं, 10 to 8 वेब लिंक्स हैं जो कि एक्सप्लॉइटेबल हैं, पीएचपी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या फिर एसक्यूएल क्वेरी से एसक्यूएल इंजेक्शन भी कर सकते हैं, पर करेंगे, ठीक है। वी विल हैव अ सेशन डेडिकेटेडली ऑन डिस्कॉर्ड, उस पर वीसी पे कनेक्ट करना, जितने भी 3-4 लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, करके देखते हैं, ठीक है। और चलो फिर बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप, ठीक है। वी विल बी कनेक्टिंग टुमारो, टुमारो मीन्स समझ जाओ यार, मतलब 11 नवंबर की रात को 8 बजे। वो सी प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, बट जब मैं सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रीम करता हूँ ना, तो अपने आप बहुत लोग आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कल भी अराउंड मेरी लाइफ के अंदर ही वॉचिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग माई लाइफ, मेरी वॉचिंग 400 या 500 अक्रॉस थी, आई डोंट नो हाउ। और अभी मैं एंड करूंगा तो 100 भी क्रॉस नहीं होंगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ। गुड नाइट ब्रदर, ठीक है।
सो सी प्रोग्रामिंग की 2 सीरीज होंगी इस वीक में। सैटरडे संडे जो नेक्स्ट है उस वही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, उसमें हम शोडान करेंगे। फिर एक ईमेल फुटप्रिंटिंग पे है जिसमें तुम ईमेल को किस तरीके से फुटप्रिंट कर सकते हो। मतलब यू गॉट अ ईमेल फ्रॉम, मतलब जीमेल पे जैसे मतलब ईमेल आता है ना, तो उसको उस ईमेल से तुम कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। शोडान पे थोड़ा बहुत, मतलब शोडान पे आज हमने कुछ किया ही नहीं है देखा जाए तो, वो कुछ हमें मिल गया था तो हम उस पर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। शोडान को हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। हालांकि शोडान गूगल डॉकिंग ये थ्रू आउट यूज़ होगा पूरे कोर्स में पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमें हर फेज में करनी होगी, ठीक है। सो जैसे अभी इटर्नल ब्लू डेवलपर भी आते होंगे, बहुत लोग आते हैं यार सी प्रोग्रामिंग में, आई डोंट नो व्हाई, बहुत आते हैं। और हालांकि मैं कुछ नहीं बताता उसमें, पॉइंटर्स, बेसिक पॉइंटर्स चल रहा था यार, मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल, मतलब टू द, और उसमें तो मुझे कुछ करना भी नहीं है। आई नीड टू ओपन अ बुक हेयर एंड आई नीड अ टर्मिनल हेयर, नथिंग, जस्ट रीड फ्रॉम हेयर। हालांकि इनपुट होता है मेरा, मैं अपनी तरफ से भी पॉइंट्स देता हूँ, बट रीड करके उसे एक्सप्लेन करके और कोड्स को लिखता हूँ और कुछ भी नहीं करता। आई हैव टू डू मोर वर्क एंड ऑल, मतलब रिसर्च स्टफ एंड ऑल, क्या टूल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, और वो मेरे को इन स्ट्रीम्स में ज़्यादा करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। उसमें तो मैं आया, कैमरा खोला, लाइव सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ता है हर चीज़ को, क्योंकि स्ट्रीम पे क्या दिखाना है क्या नहीं ये भी डिपेंड करता है ना। कई बार कुछ अ, ऐसी चीज़, मतलब वो नहीं मिल जाए, मतलब ऐसी कोई मैं लाइव ना कर दूं जिससे किसी का नुकसान हो या कुछ हो जाए। सो ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस स्ट्रीम। गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है। इफ़ यू वांट कि तुम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदरिंग ज्वाइन करना है तो ज्वाइन ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे, ठीक है। वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदरिंग होगा, यहीं से उसे कंटिन्यू करेंगे। और हम डीएनएस फुटप्रिंटिंग, ईमेल फुटप्रिंटिंग, और डब्लू गेट भी नहीं करा यार आज, ट्रेस राउट भी नहीं करा आज, बहुत सारी चीज़ हमें थी जो करनी थी वो नहीं करी। आज का सेशन तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेक्शन में निकल गया। वल्नरेबिलिटीज हैक, asus.com को हैक कर रहे थे भाई। सो by the way, I made a new algo for pathfinding. How can I publish it? Pathfinding for what? Pathfinding नहीं समझा मैं, किस चीज़ का pathfinding? If you want to publish something, you can publish on Medium. अगर कोई मतलब उसे चुरा के कहीं पोस्ट भी करता तो यू हैव अ, मतलब प्रूफ कि मीडियम पे सबसे पहले मैंने पोस्ट किया था। अब पब्लिश कैसे करना है यार, ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, वन क्वेश्चन, डे लाइट इफ यू आर इन द स्ट्रीम, व्हाट्स योर एज यार, मतलब हैव यू ग्रेजुएटेड और समथिंग, यू आर स्टिल इन स्कूल और व्हाट? Like A or digits. Okay, okay, I got it. So, uh, the question, can you answer it if you are okay with it? We're in school, college, or already graduated, working, or a 40 years old person working in tech for 10 years and all, what you are. If you are okay, you can answer. If you are not, you cannot. No problem. Okay, we are ending the stream, okay? So, stream is already past 2 hours. Today I am very happy that this much of interaction I got, because जो फर्स्ट स्ट्रीम दैट आई हैव डन ना उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं था, बहुत बोरिंग सेशन हो गया था। मैंने बल्कि आज का सेशन जल्दी एंड किया। इफ मतलब इफ आई वांट आई कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट, आई वोंट टेल द नंबर, आई एम नॉट इन स्कूल एट लीस्ट, आई वोंट टेल द नंबर। सिमिलरली फॉर मी यार, आई आल्सो won't tell you the number, you can judge my age. Someone has guessed 25 yesterday, someone has guessed 18, some tell 19, 20. None of them have guessed right. 30 के ऊपर तो कोई है ही नहीं है, कोई 30 से ऊपर मानता ही नहीं मुझे। So let's end the stream, ठीक है? Bye bye. If you want, you can join the C programming or you can just directly jump to the Saturday Sunday information gathering stream. Okay. So bye bye. I'm ending the stream. Any doubts? Can I end the stream? Did you enjoy the session? 22. No यार, नहीं यार। मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ, क्या कुछ और डाउट है, जेन्युइन डाउट, या कुछ स्ट्रीम से अलग कोई डाउट, पर्सनल डाउट, मतलब पर्सनल लाइफ का डाउट नहीं, पर्सनल डाउट एज इन करियर। कोई यार कुछ और मत करने लग जा, स्टोरी मत बताने लग जाना यहाँ पे, जैसे अभी एसक्यूएल क्वेरी में किसी ने स्टोरी बता रखी थी। दैट वाज अ गुड थिंग यार, मैं उसे पढ़ूंगा।
उसे डिक्रिप्ट करने मजा आएगा स्टोरी को। कैन वी एंड द स्ट्रीम? यस, ओके, बाय बाय फिर। यू आर 22, मी 22, नो, लेस, यू आर टेलिंग लेस। अब तो मैंने हिंट दे दिया यार, 22 लेस है। मैंने क्लीन शेव किया हुआ है, इसलिए नहीं लगता, और कुछ नहीं। ओके, एनी जेन्युइन डाउट, मतलब कोई डाउट है या मैं स्ट्रीम एंड कर दूं? कोई कुछ न्यू टॉपिक, कुछ न्यू कुछ आया हो, एनी लेटेस्ट न्यूज़? 27, अरे यार बाद में खेलेंगे एज गेसिंग का, ठीक है, क्लोज, ठीक है। सो मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ, कोई जेन्युइन डाउट मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एज के अलावा यार कोई डाउट बता दो, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, कोई डेवलपमेंट रिलेटेड, कुछ भी किया हो, और शुड आई एंड द स्ट्रीम? आज का सेशन बहुत, मतलब बहुत ऑफ टॉपिक था, कुछ भी कवर नहीं हुआ, देखा जाए तो काफ़ी कुछ कवर करना था। वे बैक मशीन चला नहीं, शोडान के डॉकिंग कवर करने थे, डब्लू गेट कमांड कवर करनी थी मिररिंग के लिए, और एक चीज़ और थी, ट्रेस राउट ही नहीं किया, उसके लिए तो पूरा 1 घंटा चाहिए था। हाउ मच रोल डज हार्डवेयर प्ले इन साइबर सिक्योरिटी? नॉट एक्सप्लिसिटली, है ना, बट इफ़ यू आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ना, सो हार्डवेयर प्लेज अ मच रोल। If you want to design a secure system for an organization or something, so hardware plays a much important role. But if you are doing normal pen testing और system testing कर रहे हो, web pen testing कर रहे हो, एंड्रॉयड ऐप्स हो गए, iOS की टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसमें हार्डवेयर की एज सच नॉलेज नहीं चाहिए। मैं हार्डवेयर की नॉलेज इसलिए रखता हूँ, मुझे बस इंटरेस्टिंग लगता है यार, मेरे तो डोमेन भी नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा हार्डवेयर के बारे में। मैं बस रैंडम आर्टिकल्स, लेक्चर्स कहीं मिल गए, वेबिनार्स देख लिए, ये जो निवीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं ये देखता हूँ, तो वहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई डोंट नो कि ये कितना यूजफुल होगा, बस करते हैं। एनी मोर डाउट? आजकल एक चीज़ और मेरे को फैसिनेट कर रही है, आई हैव, अब आई डोंट थिंक आई कुछ बताना चाहिए नहीं, मैं एक जगह गया था जहाँ मैंने प्रोजेक्ट रिव्यू किए, हैकाथॉन्स, यू नो ना हैकाथॉन्स क्या होते हैं, हैकाथॉन्स, आइडियाथॉन्स एंड ऑल। मैं एक जगह गया था जहाँ पे मैंने हैकाथॉन्स रिव्यू किए थे, दैट्स ऑल। यू इफ यू टॉक अबाउट हार्डवेयर ना, लाइक आई कैनॉट गिव यू अ होल नॉलेज कि हार्डवेयर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में, बट येस देयर एग्जिस्ट मेनी ब्रांचेस जहाँ पे हार्डवेयर का साइबर सिक्योरिटी के अंदर रोल है। फर्स्ट रोल इज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इज फॉर सिस्टम आर्किटेक्चर, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। और सिस्टम आर्किटेक्चर इज सिस्टम, फिर सिक्योर सिस्टम आ जाता है। थर्ड थिंग कैन बी पेन टेस्टिंग, बट दैट पेन टेस्टर इज एडवांस पेन टेस्टर ऑफ, मतलब दैट हैज अ नॉलेज ऑफ 20+ ईयर्स, उसको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए फिर, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री में, इफ यू आर इंडस्ट्री ना, तो वो नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि जाके यार हार्डवेयर पढ़ो, आईसीज पढ़ो एंड ऑल, अभी नहीं कहूँगा मैं, अभी नहीं है भाई एज इतनी, पर वो बहुत आगे की चीज़ है, मतलब इंडस्ट्री के साथ अपने आप हो जाएगा। यार आज नए लोग ज्वाइन नहीं हुए, ये थोड़ा मेरे को बुरा लगा बस, अच्छा भी लगा कि पुराने लोग ज्वाइन हुए, वो बहुत अच्छा था। पुराने सब्सक्राइबर्स बहुत सारे, डे लाइट तो खैर काफ़ी पुराना है, जोरो भी, देवा प्लेस शायद नया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सपोर्ट इंजीनियर इन अ बिग स्टार्टअप एट यूएसए, बट ये रिक्वायर यूएसए और यूरोप टाइम, ओके। सपोर्ट इंजीनियर तो फिर तो हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए यार। सपोर्ट इंजीनियर एज इन व्हाट? मतलब सपोर्ट इंजीनियर इन सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइनिंग, नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क डिजाइनिंग, इन व्हाट?
सो हाँ, एक चीज मैं पूछ, बट इट विल नियरली बी अनमैनेजेबल टू मैनेज, यस। अब देयर इज अ रीजन ना कि जो इंसान को मतलब हो जाता ना कि द वन दैट इज क्यूरियस टू लर्न एवरीथिंग लाइक मी, सो लाइफ तो भूल जाओ भाई, सोशल लाइफ भूल जाओ, नॉट दैट सपोर्ट लाइक गिटहब एंड लॉग्स मैनेजर, ओके। नहीं, उसमें नहीं चाहिए यार। उसमें तुम्हें अगर मैं एक बेनिफिशियल चीज बताऊं ना, ELK का नॉलेज रखो यार। इलास्ट अगर इफ यू आर विलिंग टू गो देयर ना, तो इलास्टिक सर्च एंड किबाना, लाइव सर्वर मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल एप्ट है। कुबरनेट्स, डॉकर और ELK तुम्हारे लिए, मतलब डेवऑप्स का काम है एक तरीके से, डेवसेकऑप्स भी कह सकते हो। इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना मतलब लॉग मैनेजमेंट के लिए बेस्ट हैं। मतलब अगर मैं टॉप 5 कंपनीज की बात करूँ ना, इंटरव्यूज के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं ELK, मैंने उस पर काम किया हुआ है। ओके फिर अब स्ट्रीम फाइनली एंड करते हैं। इंटरेक्शन ही 18 मिनट्स का हो गया, मतलब 12 o'clock करनी थी, ठीक है। सो और कोई डाउट्स हो डिस्कॉर्ड पे मेरे से कनेक्ट करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम, डू यू नीड माई IG? IG पे पूछोगे डाउट, आई विल क्रिएट अ सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब कि फॉर दिस चैनल ओनली, ठीक है। वहाँ पे डाउट पूछना, पर्सनल तो नहीं दूंगा मैं। पर्सनल पे यार तुम लोग फिर देख लोगे सब, सब पता चल जाएगा तुम्हें। हालांकि यू कैन इजीली, मतलब मेरा स्क्रीनशॉट लेके तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। आई एम नॉट जस्ट गोइंग फॉर सपोर्ट जस्ट टू एंटर इन अ जॉब। हाँ, यू कैन गो, उसमें हार्डवेयर नॉलेज नहीं चाहिए। उसमें तो फिर ये है, अगर इफ यू आर ऑलरेडी मतलब शॉर्ट लिस्टेड ना, तो यू जस्ट डायरेक्टली गो यार। दे विल ऑलरेडी, मतलब दे विल टीच यू एवरीथिंग, मतलब दे विल ट्रेन यू फॉर एवरीथिंग। गुड नाइट ब्रदर। ठीक है, बस स्ट्रीम एंड करते हैं। 5 वॉचिंग हो गई है एकदम से, ठीक है। हाँ, फॉर बिफोर दैट एंडिंग द स्ट्रीम, इसको मतलब एक टर्म मेरे को नहीं पता इसे क्या कहते हैं, कि आई वाज रिव्यूइंग हैकाथॉन एंड आइडियाथॉन प्रोजेक्ट्स, जज कर रहा था एक तरीके से कह सकते हो। सो उन प्रोजेक्ट्स में वो वाले प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे, पता नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं, वो जेस्चर्स वाला कुछ था कि हैंड मोशन से, आई ब्लिंक से, वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। एक ने मेरे को, मतलब मैंने खुद भी बनाया था ये वाला, अगर काम कर रहा हो तो। नहीं कर रहा क्या? लाइट कंट्रोल का कर रहा है शायद, नहीं कर रहा, पता नहीं। सो ये वाली चीज़ भी मेरे को फैसिनेट कर रही है अब। मैं मतलब इसको भी सीखना चाहता हूँ अलॉन्ग विद साइबर सिक्योरिटी। आई डोंट नो इस एग्जैक्टली क्या कहते हैं इसे। हालांकि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट लाइट वाला कंट्रोल वाला पाइथन से बनाया है, पर इतना काम नहीं कर रहा अभी भी। चलो फिर लेट्स एंड द स्ट्रीम, ठीक है, बाय बाय। कोई डाउट अभी भी? मैं बार बार वही चीज़ पूछ रहा हूँ। दे आर डीप लर्निंग मॉडल बेस्ड ऑन CNN, हाँ वही यार, वही डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट मतलब फैसिनेटिंग तो है, देखो मतलब मैं AI का आई एम एनिमी ऑफ AI, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, और फ्यूचर यू नो दैट फ्यूचर विल बी लाइक AI वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। तो आई एम तो राइवल ऑफ AI, बट यार आर्टिफिशियल, मतलब ऑनेस्टली व्हेन आई स्पीक अबाउट दिस डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, these things are quite fascinating. Robotics, machine learning, deep learning. So but what you can do, my mind is, you know, uh, एक सिंगल माइंड है यार, मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ। हार्डवेयर आई ऑल्सो स्टडी हार्डवेयर, द आई ऑल्सो स्टडी साइबर सिक्योरिटी, आई ऑल्सो डू डेवलपमेंट, आई, you don't know, I also study astrophysics, like study of this space and all. I am also fascinated by that, and now this new thing. So this is the problem na, कि the person that is too much of revolved around knowledge, उसकी पर्सनल लाइफ तो भूल जाओ भाई, पर्सनल सोशल लाइफ नहीं रहती। चलो फिर फाइनली इनफ ऑफ टॉक्स, गुड नाइट। चैट पे लिख देता हूँ ताकि इसके बाद अब कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पर फाइनल गुड नाइट, ठीक है। विल मीट यू टुमारो। सेशन स्ट्रीम को एंड करते हैं फिर से, 5 वॉचिंग हो गई है, नाइस। ठीक है फिर, आई एम ऑल्सो इन सेम सिचुएशन, पाइथन, रस्ट, C++। हाँ यार, ये तो बोला भी नहीं है मैंने। मेरा असेंबली करने का मन करता है यार, असेंबली में CTF खेल, मतलब CTF होता है कैप्चर द फ्लैग। असेंबली और C डेडिकेटेड लिए हैं उसमें, मतलब करने का मन करता है। कई बार सोचता हूँ कि लीड कोड पे जाके अपनी रैंकिंग बढ़ाऊँ, कोडिंग करूँ। देयर आर लॉट लॉट टू डू थिंग्स इन, मतलब आई इट्स आई टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी में इतनी चीज़ें हैं कि मतलब बाकी तो फिर भूल जाओ, हो नहीं सकती। साइबर सिक्योरिटी में इतनी चीज़ें सीखने के लिए, बट द मेन थिंग इज कि
A person should be always curious for everything, every domain, every knowledge. The most you can, the topic we are studying, na, information gathering. The most information you can gather, the best it is. Why चलो, लेट्स एंड द स्ट्रीम नाउ. बाय बाय, गुड नाइट. कोई डाउट्स हो बाद में कमेंट्स में, या फिर व्हाट यू कॉल डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना. आई विल क्रिएट अ इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. एक अलग इंस्टाग्राम है भी मेरे पास. एक स्टार्टअप था मेरा कभी पहले, सेव बाइट नाम से. इफ़ यू सी द लिंक्डइन ना, वो उसी पे कोलैब में सेव बाइट व्याद. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट. ओके.